Okay, so Jain Sahil, how are you? I'm good, sir. I'm great, sir. How are you, sir? I'm good, buddy. How are you feeling about after your recommendation? This is the question. If you not be asking that, but anyhow, right? How are you feeling about it? Yes, sir. I'm feeling great, sir. Quite excited to see that what is coming next, and it's a proud moment for the parents and for the family. So it's quite good, sir. I'm feeling it. Okay, that's wonderful, Sahil. Okay, so in this video, we'll discuss about your journey, right? From Sure. PSB, then FSB, how you've been through, what other, the questions they ask you in your interview, or what kind of TAT, VAT, and all those things, GD, lecture rate, and all those things about whole selection procedure, right? So you can start with a little bit about your introduction, like your about your background, so how many attempts you previously gave for that, and all. Then we'll go with the PSB, how many people reported, right? And then how you made it through. And after that, you got a call for FSB, how many friends you make, what kind of environment you have been, and all those things we'll cover one by one, right? So you can start with a little. Sure. Sir, as my name is Sahil, and I'm from Una, Himachal Pradesh. And sir, I've studied in Sainik school, so there was a quite of that thing to get into defense from the beginning. So, sir, I've cleared NDA one time, and I've given the interview at the SSB only one time for this. And at that time, I was conference out. So, this was my second attempt after that NDA. So now, sir, now coming to this PSP. So, should I continue in English or can I switch to Hindi also? You can English, Hindi, whatever language you prefer, no issues. But if you little bit stick to English, that would be okay because the majority people are Okay. from South. But Hindi will be okay also. It's not like that we are forcing. जो भी Muslim Okay, sir. speak, we're interactive with the people. They can Okay, relate sir. with you. Sure. I'll be in English, and if there will be Hindi, any yes, yes. Yeah, extra word, keep I'll. it. Yes, Okay, sir. okay. Okay, so starting about the PSP. So my center was there only in Noida only, and during my PSP was on 5th. So I 6th in the morning slot, 8 बजे वाला. So sir, at that time there was like 100 का रिपोर्टिंग हुआ था उसमें, and 60 मेरे बैच में 60 आए थे, 60 टोटल. और उसमें वो 13 के ग्रुप्स बना दिए थे उन्होंने उस टाइम पे. और सर फिर वैसे ही नॉर्मल पीपीटीटी वगैरह हुआ, ओआईआर वगैरह. तो हमारे बैच में से तो नहीं निकाला था ओआईआर में किसी को, बट लेटर ऑन मुझे पता लगा था कि बाकी बैचेस में से निकल रहे थे बंदे. तो फिर वही सर पीपीटीटी वगैरह हुआ था, नॉर्मल अच्छे से दिया. और उसमें भी ऐसा हुआ था कि ग्रुप लीडर बन गया था. तो अच्छा काफी अच्छा. हेल्प वगैरह हुई थी उसमें. यस सर. एंड तो सर वही मेरे ग्रुप से जैसे 2 हुए थे. तो टोटल आई थिंक उस दिन 24 हुए थे 5th जैन को, पूरा ऐसे मिला के 12, सॉरी हाँ सॉरी 12 हुए थे टोटल. मेरे बैच से 60 में से 12 लिए थे. और फिर जो 40 बंदे बचे थे उनमें से कोई 5-6 लिए थे उन्होंने. तो अराउंड हाँ इतने 20 कर तो हो ही गए थे जो फर्स्ट डे 5th वाले दिन रिकमेंड हुए थे पीएसपी में, पीएसपी के लिए. जब 20 बस बंदे फिर recommend- वही. यस सर, यस सर. फिर उसके बाद ये हो गया, फिर हम उस दिन तो चले गए थे घर. फिर नाउ नेक्स्ट अबाउट द एफएसपी. तो सर ये मेरी डेट आई थी जल्दी 29. जल्दी इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो? मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. ओके. अच्छा सही, ओके. सो पीएसबी में जो तुम्हारी मतलब ओआईआर में लाइक तुम्हारे बैच में तो किसी को आउट नहीं किया, राइट? नो सर, नो. ओके. व्हाट अबाउट पीपीटी, तुम्हारे में कितने बंदे बैठे थे, कितनों को निकाल दिया उन्होंने? यस सर. सर मेरे ग्रुप में से 13 थे, और 13 ईच का ग्रुप पूरा डिवाइड किया था कुछ ऐसा करके. तो सर मेरे ग्रुप में से 2 रिकमेंड हुए थे, एक मैं हुआ था और एक और हुआ था. तो वो भी थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो गया था. तो फिर ये मैं रह गया था. तो मतलब मेरे ग्रुप से मैं एक अकेला ही था जो फाइनल पीएसपी तक देने गया था. यस सर. ओके. एंड तो तुम्हें क्या लगता बाकी है ग्रुप से क्या थे. क्या रीजन रहा होगा कि जो बाकी बंदे नहीं क्लियर हुए पीपीटी में? हाउ वाज योर यस सर. डिस्कशन? श्योर सर. सर अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट इज द नरेशन पार्ट. ऐसे मतलब जैसे मैं नरेशन कर देता था तो अच्छी नरेशन कर देता था, मुझे ऐसा लगता है. और जैसे कुछ लोग थे जो नरेशन ढंग से नहीं कर पाए थे. शायद उनकी स्टोरी काफी अच्छी भी थी, पर उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे. जैसे वो दिखा ही नहीं पाए उनको कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या एक्शन. तो वो प्रॉब्लम आई थी उनमें. और फिर थोड़ा बहुत मतलब ग्रुप डिस्कशन में भी कुछ बंदों ने ऐसे पार्ट नहीं लिया था. जैसे अब जैसे होता है कि स्टोरी है, अब जिस बंदे ने अपनी स्टोरी लिखी है तो वो अपनी स्टोरी पे फोकस करे जा रहा है बार बार कि हाँ मेरी स्टोरी करो, मेरी स्टोरी करो. पर वो लेकिन जब ग्रुप एक साइड जाने लग जाए तो हमें उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए. तो वो भी एक आधा था सर. हेलो. हो गया था कि नहीं मेरा ही करो, मेरा ही करो. तो ये थोड़ी दिक्कत हुई थी. एंड बाकी ये था सर मेन, बाकी नरेशन ही था जिसकी वजह से मेरे ख्याल से
और एक्टिवली उसमें पार्ट लेना, उन पॉइंट्स देना, ग्रुप्स के साथ जाना, उनको भी बोलने देना, खुद भी बोलना। ये सर आगे जब मैंने जीडी में किया वहाँ पे अपने इसमें जीडी और डांस में जीडी करा, तो मैंने इस चीज़ का काफी ध्यान रखा कि जो बोलूँ वैलिड बोलूँ, अच्छा बोलूँ, और बाकियों को भी मौका दूँ, खुद भी बोलूँ। और जो चुप रह रहे हैं उनको भी बोलो कि हाँ भाई इनको भी बोलने दो, कि गिव चेस्ट नंबर दिस फ्लोट लाना, गिव गिव देम द चांस टू स्पीक। तो ये सब सर काफी मैटर उस टाइम करता है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है। और फिर बस सर वही होता है, फिर उनको दिख जाता है ग्रुप वालों को भी कौन अच्छा है। अब जैसे अगर हम अच्छा राइट। बोल रहे हैं तो वो बोलते हैं, लोग खुद ही रिकमेंड कर देते हैं कि ओके। मेरे को जैसे वहां पे भी इसमें जीटो में भी जो ग्रुप प्लानिंग हुई थी, तो वहां पे मैंने पॉइंट्स दिए थे, तो वहां भी मुझे रिकमेंड कर दिया था खुद ही उन्होंने। सभी बोलने लगे थे विल गिव चेस्ट नंबर 20 तो ही विल नरेट द फाइनल नरेशन। तो वहां भी यही हुआ था ओके सेम। ओके ओके okay. I think we have already video of yours of PSB experience on our channel, so we will request user if you want to watch his PSB experience, you can go through that. We'll directly go for the FSB. Okay, so you can start from your first day, how many people you met and how it went. People already knew that you already, they have seen going through your already videos which we uploaded, right? So what was their reaction and then how things went and all, right? Please start. Sure, sir. Sir, my reporting was on 29th, and my FSB was from 29th to 3rd. So, sir, there was a total reporting of 50 reporting of 60 people, and 54 reported finally. And Hmm. sir, they divided the group accordingly, like accordingly they have divided the groups. Like in my group was from 20 to 28, and sir, Hmm. everyone in my group has given the SSB one time only, like me, as I have given it only one time. So बाकियों ने भी एक एक बार ही दिया हुआ था। और बाकी फिर सीरियल नंबर वाइज थे, तो देयर वाज वन चेस्ट नंबर 54 हु वाज द लास्ट वन, ही हैज गिवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो उसको लास्ट Okay. में रखा था, और उसकी एज भी काफी थी, मतलब ही वाज लाइक अराउंड 26-27 ईयर्स का था। वो अपनी जॉब जूब करता था, तो अकॉर्डिंगली इन्होंने फिर डिवाइड किए हुए थे। तो सर फिर वगैरह थे, हम नहीं दे पाए थे। जैसे मेरा एक था कि मेरे को प्रोविजनल डिग्री मिली थी कॉलेज से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो कॉलेज से लिखवा के ले आना कि तुम्हें फाइनल डिग्री दे देंगे हम बाद में। तो वो मैं फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सर, वो उनको पता होता है, मतलब लिखा होता है उन्होंने कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम वहां जाके बोल देंगे सर कि आपने तो मेरे को नहीं बोला था, या मैंने कि जो जो तुम्हें बोला है बनाने को वो बना के लाओ, वरना फिर यहाँ यहीं से भी डॉक्यूमेंट आउट हो जाओगे। वहाँ एफएसबी से भेज देते हैं। पर तो फॉर्चुनेटली पहली सर चीज, सभी लेके सबसे आए थे, पहली तो चीज तो वहाँ डॉक्यूमेंट यस। चेकिंग की होती है। फर्स्ट थिंग इज ऑन डॉक्यूमेंट चेकिंग, चेक वेरी स्ट्रिक्टली, राइट? यस सर। बाकी यस सर, शाम ऑन तक मेरे 29 डे को लैपटॉप बच जाते हैं मेरे यस सर, यस सर। को। बस उस दिन 29 को सिर्फ उन्होंने वही किया, डॉक्यूमेंट्स ही चेक करे और रूम्स वगैरह अलॉट करे। फिर जो बेसिक चीजें देते हैं, जैसे हैंगर्स वगैरह बांट दिए, या फिर लाइट्स, प्रेस प्रूफ, जो नॉर्मल थिंग्स थी, तो वो सब करके। और इस बार ये था कि सर वैसे हर बार शायद वो देते थे, कंबल वगैरह देते थे, लाइक द बेड शीट्स एंड कंबल पिलोज दे यूज्ड टू गिव। बट दिस टाइम दे हैव मेंशन्ड क्लियरली दैट ड्यू टू द कोविड वी विल नॉट गिव यू दीस थिंग्स, यू विल हैव टू अरेंज इट बाय योरसेल्फ। So like all those who are going and they will go in the future Yeah, also, so they'll yeah, have yeah. to That share that that. thing is like from last 2 years the same thing is going. They're not providing any bedding. और वो बेड दे देंगे, गद्दा दे Yes, देंगे, उस पे आपको सिर्फ yes sir, सोना yes है, sir. अपना यूज करो, Yes, ब्लैंकेट ब्लैंकेट कुछ, और मच्छरदानी दे yes देंगे sir. आपको। But if someone like if someone got some fever or something, जैसे एक था उसको फीवर वगैरह हो गया था, तो उसको उन्होंने फिर दे दिया था कंबल बाद में। और बस वो पेमेंट बेसिस पे दिया था, लाइक देयर वाज समथिंग 50 रुपीज पर डे और समथिंग लाइक दैट। सो दैट थिंग वाज दे वर डूइंग। यस सर, मोनेटाइजेशन के तरीके बहुत अच्छे हैं इन लोगों के पास। यस सर। एंड दे आर लाइक गिविंग दे विल गिव द मॉस्किटो नेट आल्सो। लाइक वहाँ मच्छर वच्छर थे फर्स्ट डे, तो वी हैव कंप्लेंट देम कि सर मच्छर बहुत है, ये सब करो। तो फिर मॉस्किटो नेट भी प्रोवाइड हो गया था। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मिल जाती थी, ऐसी कोई वो नहीं थी। और रिगार्डिंग द फूड आल्सो सर, थोड़ा फर्स्ट डे थोड़ा था, बट उसका धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। लास्ट दिन थोड़ा अच्छा दिया उन्होंने, वो बाकी तो तो देना ही सब देना है भाई, नॉर्मल लास्ट था। दिन तो समथिंग वीआईपी ट्रीटमेंट है। ओके, यस सर, सो यस देन व्हाट हैपेंड, यू वेंट टू योर रूम, ओके, देन हाउ यस थिंग्स सर। वेंट? वही रूम, यस सर, रूम्स वगैरह सब अलॉट। फिर वही उस दिन, फिर नेक्स्ट डे फिर हमको रात को ही, जैसे एवरी डे इन द नाइट दे यूज्ड टू इन्फॉर्म अस अबाउट द नेक्स्ट डे शेड्यूल। इन नाइट अराउंड 8 o'clock सर, एक नाइट मस्टर मस्टर बोलते हैं सर, लाइक इन तुम्हारा नेवी कैमरा काफी से दैट। शेक हो रहा है। करो सर, कंटिन्यू। हाँ प्लीज। तो सर वही था, फिर जैसे रात को मस्टर होता था, उस टर्म एक नई सुनने को मिली मेरे को वहां पे, कि मस्टर, लाइक जो फॉलिन में तो बताते हैं कि नेवी में जो फॉलिन होना है उसको मस्टर कहते हैं।
तो ये सर यस सर, तो ये सब था। तो वही रात को फिर हमें बता दिया जाता था कि अगले दिन क्या होगा। तो वही था सर, ब्रीफ। फर्स्ट डे तो सेकंड डे। यस, फिर वही सेकंड डे सर अपना वो था, साइकोलॉजिकल टेस्ट था पहला वाला। उसमें वही नॉर्मल 12 स्टोरीज, फिर वैट, फिर टैट और फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो सर स्टोरीज तो वो नॉर्मल थी 12 जो हमको बनानी होती है। तो सिंपल सिंपल स्टोरीज थी, मतलब जो अवेलेबल भी होती है, बाहर बंदों को पता होता है, जो देखी होती है वैसी वैसी थी। ऐसी कोई मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गई वो स्टोरी। तो नॉर्मल पिक्चर्स थी उनको करने के लिए। फिर अच्छा, जो मैंने यूट्यूब पे रिगार्डिंग डाल वैट रखी है ऑल्सो। वीडियोस और प्रीवियस टेट पिक्चर्स, उसमें से कोई आई थी क्या? सर एक नोटिस बोर्ड वाली है, आपने डाली हुई थी, जो एक वो वो आई थी थी? कि नोटिस बोर्ड सामने काफी सारे खड़े हैं। फिर ओके, एक वो फार्मर वाली थी सर, कि वो भी आई फार्मर है थी। उसको एक जा रहा है, वो थी एक। और सर एक ग्रुप वाली भी थी सर, जिसमें 4-5 बंदे बैठे होते हैं, समथिंग ऐसा था ना सर एक। मतलब ठीक है, फिर आपने 10 में स्टोरी से 4-5 हंसी होंगी, मतलब सेम टू सेम ना? थी सर। Same। यस, ज्यादा होंगी सर मेरे हिसाब से तो। ज्यादा होंगे। नहीं नहीं, ठीक है, वो ध्यान में रखकर ही बनाई गई है वीडियो, राइट? वो ऑलरेडी आ रखी है, वही आती है घूम फिर के। यस सर यस। बच्चे तो ने देखी होगी तो उनका बस बेनिफिट तो हुआ होगा। तुम यस देख सर कर यस गए सर, थे? वो तो यस सर। तुम देख कर गए थे वीडियो पहले? हाँ हाँ सर, मैं तो सारी देखी है सर आपकी। मैंने कोई नहीं जाने। छोड़ी। यस सर। तो उसमें था। और फिर उसके बाद वही वैट, वैट भी नॉर्मल था वो तो सर। लाइक 15 सेकेंड्स का टाइम होता है एक वर्ड के लिए। तो वो तो आराम से 60 जो वर्ड्स होते हैं वो आराम से बंदा कर सकता है, अगर उसने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी हुई है। तो मैंने वो प्रैक्टिस करी थी, तो मेरे वो सारे इजीली बना लिए थे। और जिस बेसिस पे वो करने होते हैं, जैसे मतलब कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि जैसे लोगों का नाम नहीं आना चाहिए उसमें, कि जैसे ऐसे नहीं मतलब इफ इट इज गुड, लाइक वी कैन नॉट राइट तरुण इज अ गुड बॉय। तो ऐसे से करके सर, हम्म। तो थोड़ा ये सर। तो वैसे वैसे करके जो नॉर्मल नॉर्मल उसके क्राइटेरियाज होते हैं उनको फॉलो करके वो आराम से बन गया था। फिर उसके बाद उन्होंने एसआरटी की बुकलेट्स बांटी हमको, जैसे ये टेस्ट खत्म हो गया। तो उसका पहले मुझे पहले हर चीज की तो, ब्रीफिंग तो होती साहिल, है। कोई कोई पिक्चर तुम डिस्क्राइब कर सकते हो? कुछ स्टोरी, कोई पिक्चर मुझे बताओ जो आई हो। वो पिक्चर तो यस मुझे सर गूगल मैं मिल जाए, कहीं से मिल जाए, उसके ऊपर एक स्टोरी बताओ, तुमने क्या स्टोरी बनाई उसके ऊपर। कोई भी पिक्चर आप जैसे रैंडमली जो मेरे वीडियोस उठाई थी आपने, उसमें से कोई भी पिक्चर जो यस आप सर जैसे सर मैं वो नोटिस बोर्ड बोर्ड वाली वाली बताओ, बात। बोर्ड वाले में क्या स्टोरी बनाई, बोर्ड वाली बता रहे हो, उसमें क्या स्टोरी बनाई थी कौन आप? सी वाली सर? विच वन जो सर, विच वन, सॉरी सर। जो बोर्ड वाली पिक्चर थी ना, इसमें कुछ लड़के खड़े यस हुए यस थे श्योर। सामने, उसकी क्या स्टोरी बनाई थी? यस उसकी स्टोरी। yes sir, sir, I made the story like that. Ramesh was a student. So one day after his classes, he saw a crowd near the notice board. He went there and found that his college or school is going to organize a basketball competition. So as he was also a basketball player, he also went there. And by seeing his game and skills, the coaches selected him. And after that, by seeing his more good game, by more extra practice, hard work, the coaches made him the captain of the team. So he, along with his teammates, they improved upon their passing skills, shooting skills, dribbling skills. And finally, the starting matches was a bit easy. So it was a bit easy for the Tarunan team to play and win that matches. But their final is with the team who was the champion from the past 5 to 6 years. Oh, So he motivated his team. So as his teammates was quite demoralized from that. So Tarun hmm. went to them. He motivated him कि भाई you should come up. You should keep yourself good. So they worked hard and finally they like beated that team and they won the trophy for the college. इस टाइप की मैंने स्टोरी बना दी सर। That's a good story actually. Yes So, sir. Sahil, okay, so how you write that story? Like, what all things you put up over there, like age, gender, or something? How you start the writing a story? यस सर। सर जैसे जब हम पीपीडीटी के लिए जाते हैं पीएसपी में जैसे करते थे, तो उसमें हमें मेंशन करना होता था कि ये डॉट लगा दो। फिर उसको मेंशन करते थे कि हाँ ऐसा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सिंपल बस नंबर्स दिए होते हैं, जैसे हमको बुकलेट देते हैं। उसके अंदर जैसे एक पेज के ऊपर एक पे 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, फिर पेज चेंज करेंगे 3 4 ऐसे करके 12 तक होता है। तो वैसे ही इसमें हमको ये नहीं मेंशन नहीं करना होता कि मैंने इतने करेक्टर देखे, इतना ये देखा वो देखा, कुछ नहीं मेंशन करना है। जो जैसे पिक्चर आएगी, जो तुम्हारे दिमाग में यार, वैसे सीधे स्टोरी लिखना शुरू कर दो। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स यू Like, हैव टू like डू। give two lines of the story which you told right now. How you started that story? Sir, I started like this only. Ki Ramesh was a student, and Hmm. one day after his classes, he saw a crowd near Okay, the notice board. He went there and continued. okay, Yes, okay. sir. And any other picture, negative picture, which you can recall it? What story you made? Any negative picture? Yes, sir. I made one negative picture also. Like there was something. There was one picture जिसमें Hmm. ऐसा था कि जैसे बोट होती है ना सर, कश्ती होती है। तो उसका कश्ती का एक ऐसे कश्ती या फिर बुलक कार्ट होता है। तो उसका जो कार्ट होता है वो ऐसे ऐसे शेप में होता है समथिंग। Hmm. तो उसको बहुत
क्लोज से खींचा हुआ है, जैसे पीछे से बुलक जैसे काट के बिल्कुल पीछे से खींचा हुआ है। तो काट Okay. कैसे दिख रहा है कि हाँ ऐसे कुछ ऐसे बन के है, ये सर ऐसे ऐसे बस इतना सा एरिया दिख रहा है, और आगे ऐसे कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है उसके अंदर। तो मैंने उसका फिर वो ऐसे मैंने कर दिया था कि कार टोंगा एक्सीडेंट बना दिया था Hmm. कि मैंने उसमें भी ये रखा कि जैसे ऐसे बोलते हैं कि जो तरुण है वो स्टूडेंट है, तो one day when he was going towards his college, so he saw a car and Tonga accident. Hmm. So the due to the accident, the car driver was okay. He was not that much injured, but the Tonga driver was badly injured because of the accident. So Tarun immediately rushed there. He didn't waited for the ambulance. He like stopped the passerbys. He took Tarun with him. Like he took Tarun, stopped the passerbys, and he took Tarun and himself. He sit in the car and went to the hospital. And similarly, he called the ambulance also for the driver, for the car driver, so that he can also be saved. So when he reached there, like he informed the parents of not the family members of the Tonga driver that he has been injured, and also informed the police also about the accident. So finally, at the end, that Tonga driver was saved, and the doctors came out and he said that due to the presence of mind of Tarun, that he didn't waited for the ambulance and stopped the passerbys and took him to the hospital. So due to which he was saved. That's his story. Okay. Any other story which is gray area of white and black means negative and positive in between somewhere? Any story, Uh, any picture you able to recall it? That farmer one, what story made in the farmer one? sir, अच्छा, okay, sir. Regarding the farmer, sir, I just made that story only about that only कि there was one student, तो मतलब मैं बेसिकली स्टूडेंट के अराउंड ही बनाई थी कि लाइक Okay. एक स्टूडेंट होता है, उसने एग्रीकल्चर का बीएससी एग्रीकल्चर अभी भी कंप्लीट करा है। तो वो देखता है कि उसके जो विलेज है या फिर उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है, वहां पे वो देखता है कि जो एक पर्टिकुलर क्रॉप है, पहले तो बहुत अच्छी होती थी, मतलब अच्छी प्रोडक्शन वगैरह होती थी उसकी, बट अब उसकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है। तो Okay. वो जाता है, हर गांव में Hmm. जाता है, उसको वो ठीक वगैरह कराता है, कि जैसे पूछता है हर फार्मर से जाके, उनकी फीडबैक्स लेता है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्यों नहीं हो पा रहा है इतना, क्यों तुम वो नहीं कर पा रहे हो। फिर वो फार्मर से अच्छे खासी फीडबैक लेता है। फिर उसके बाद अपने कॉलेज में वापस जाता है, उसके अराउंड रिसर्च करता है, अपने टीचर से हेल्प लेता है कि कैसे इस चीज को अच्छा किया जाए। और फिर जैसे ही वो बढ़िया हो जाता है, मतलब उसको पता लग जाता है कि किस चीज के ऊपर कहाँ पे कमी आ रही थी, तो जैसे वो कमी आ रही थी उस चीज को सॉल्व करता है। फिर फार्मर्स को बांटता है, तो जैसे एक एक बांटेगा तो सर मिनिमम फार्मर्स को दे पाएगा। तो सर वो फिर गवर्नमेंट से टाई अप करता है, तो एक अपना काइंड ऑफ स्टार्टअप ही स्टार्ट कर देता है कि Wow. गवर्नमेंट से उसने टाई अप कर लिया, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हुआ और देश को प्रॉफिट हुआ और गवर्नमेंट का फायदा हुई है और फार्मर्स का फायदा हुआ। That's great. But any dead body you came across like in picture, dead body वाली picture थी? नो सर, ऐसा ऐसी नहीं थी सर, लाइक Any other negative बॉडी picture बॉडी। you can recall? एक ये थी सर कि जैसे पीछे से दिख रहा था कि जैसे कोई आदमी जा रहा है और ऐसे काफी तूफान जैसा चला हुआ है। अच्छा अच्छा. कुछ एक ऐसी स्टोरी भी थी, तो उसमें मैंने एक ऐसा कर दिया था कि मतलब कि उसमें मतलब ये स्टोरी बनाई थी कि जैसे एक लड़का है, जैसे कोई भी, तो वो बहुत डेडिकेटेड होता है अपने काम काम को लेके। तो उसकी जैसे उसका एक फार्म होता है जिसमें वो वेजिटेबल्स वगैरह और सब्जियां वगैरह उगाता है। तो उसको कहीं से ऑर्डर आया होता है कि जैसे मतलब एक आदमी होता है, उसकी बेटी की मैरिज होती है, और उस आदमी में भी ऐसा है कि वो आदमी काफी जैसे गरीब घर का होता है, और लेकिन उसे पैसे वगैरह काफी जोड़े होते हैं, अपनी बेटी की शादी करानी है कि मेरे को मतलब लाइक ही हैज टू द लोन फ्रॉम वेरियस पीपल। और सर उस दिन तूफान हो जाता है और काफी आंधी वगैरह हो जाती है, तो जिसकी वजह से काफी रिसोर्सेज की से कमी पड़ रही होती है। पर ये जो जिसका ये फार्म था, जो मेन हीरो है, तो उसका जो फार्म था जिससे उसने वेजिटेबल्स वगैरह ऑर्डर करी थी, तो उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो शायद ना करे उस चीज को, बट ही वेंट। हेलो। हाँ, I'm listening. Carry on. आवाज आ रही तो है. सर बस वही कि वो अपना डेडिकेटेड रहता है कि हाँ मुझे करना है, तो मेरे को वो डिलीवर करना है उस चीज को। तो फिर मैंने इस चीज के अराउंड करी थी उस टाइम स्टोरी सर। Yes. अच्छा अच्छा. Okay, now after that we have that. So, That, yes sir. are you able to correlate or relate जो पिक्चर आपने टैट में देखी थी उसी से रिलेटेड वर्ड्स आए हैं उसमें बैट में? Have you like Yes sir, able there. to Yes, come yes up sir, with sir. that? There was that is like, and sir, the words which are present on YouTube and on the maximum social media, like from where people used to practice, so अगर उनको भी सर ढंग से किया हो तो वहाँ पे बिल्कुल आराम से बन जाते हैं वर्ड्स एकदम से। जो 15 सेकंड्स मिलते हैं एक वर्ड के लिए, तो आराम से क्लिक हो जाते हैं और बढ़िया। और उसमें वो बोलते भी हैं कि अगर जरूरी नहीं है कि तुम एग्जैक्ट उसी वर्ड के ऊपर बनाओ, अगर तुम्हें उसके सिनोनिम्स भी पता है या उसका मतलब, उस वर्ड का मतलब तुम अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हो अपने सेंटेंसेस में, तो तुम वो भी कर सकते हो। तो ऐसा भी ये सब चीजें पॉसिबल होती है। Okay, so कुछ words तुम्हें याद हो वैसे I'll later on I'll ask you all the words maximum so we can make one more video for everyone.
Same kind of Yes, thing. sir. So tell some words and with sentences. What sentence you gave? Like, sir, there was one word like impossible. Hmm. That was also there. So I made it like that. Like nothing is impossible if we make good efforts during the preparation. Something like that Okay. I brought. And then there was hope. Hmm. So at that time I wrote that the soldiers are that the soldiers that we have a hope with our soldiers who are guarding our nation. Something like that I made. And like these all words was there, sir, which I can recall it at this because that was 15 seconds was coming, so I Yeah, just that barely was remember. fast. Yes, yes. Fine. Hmm. Then next will be SRT, right? नेक्स्ट वाज द एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. सो उसमें ऐसा मैंने सुन के गया था कि लोग बोलते थे कि तुम कम भी बनाओ पर वैलिड बनाना, कि मतलब अच्छे बनाना, कि Right. लाइक कि जो भी बनाओ तो बढ़िया बनाओ. पर सर मैं देख रहा था कि कुछ ऐसी एसआरटीज थी जो बन जा रही थी, मतलब जैसे नॉर्मल नॉर्मल, तो मेरी अराउंड 50-51 बन गई थी. तो मैंने फिर वो खींच दिया. वैसे ऐसे नहीं रहा कि मैंने 35 ही बनाने या 40 ही बनाने. तो वहाँ पे ऐसा था कि जितने मेरे से बन रहे थे, क्योंकि उन्होंने अराउंड 30 मिनट्स दिए थे हमको Hmm. एसआरटीज कंप्लीट करने के लिए. 30 मिनट से मेरे से 50-51 हो गए थे, तो मैंने सर उतने कंप्लीट कर दिए थे. Okay, कुछ SRTs बताओ जैसे जैसे क्या and what was all your response? कितने क्या response थे आप? एक था जैसे कि यू वेंट फॉर अ ट्रैक, लाइक तुम ट्रैकिंग के लिए गए हो, और जब तुम जा रहे हो तो एक बंदा है तुम्हारे ग्रुप का जो इंजर्ड हो जाता है. तो फिर Hmm. मैंने उसमें लिखा था कि इमीडिएटली विल लुक फॉर द लाइक सम स्टिक्स, एंड उसका एक टेम्परेरी सा स्ट्रेचर बना देगा, जिसमें से Hmm. 2 लोगों को वो कह देगा कि प्लीज लाइक उसको नीचे लेके जाओ फॉर द मेडिकल हेल्प, और Hmm. बाकी जो बंदे बचे होंगे उसके साथ अपने ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए आके वो रखेगा. और सर Hmm. उसमें कुछ उसके रिलेटेड बहुत है सर, जैसे मतलब पानी पूनी के रिलेटेड, क्योंकि आई थिंक वी हैव टू इट्स अ कोस्ट गार्ड, वी हैव टू सेव दैट थिंग. वो शिप्स के रिलेटेड भी थे कि मतलब कि तुम देखते हो कि तुम जैसे कोस्ट कोस्ट पे खड़े हो, तुम देखते हो कि अराउंड की शिप डूब रही है, तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन. तो मैंने उसमें लिखा था कि जो भी होगा, नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होता है या फिर जो भी एक पोर्ट के ऊपर जो भी कोस्टल सिक्योरिटी वगैरह होती है, उसको फटाफट से इन्फॉर्म करूंगा, लोगों से हेल्प लूंगा कि भाई कि ऐसे ऐसे शिप डूब रही है, तो ताकि उसको जल्दी जल्दी जाके जो लोगों के मैक्सिमम लाइफ जो है वो बचाया जा सके. तो ऐसे ऐसे स्टार्टिंग थी जिसपे मैंने ऐसे से मतलब वो रखे. Okay, और एक तो SRT और कुछ फैमिली रिलेटेड SRTs थी? हाँ सर, फैमिली रिलेटेड ये थी कि हाँ कि जिससे कि जैसे तुमने मैरिज करनी है, पर जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसके लिए तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं. तो फिर मैंने उसको लिखा था कि आई विल ट्राई टू कन्विंस माई पेरेंट्स एंड आई विल लाइक टू टेल देम कि लाइक दिस इज द गर्ल विद whom आई वांट टू मैरी. सो वही लिखा था कि आई वुड लाइक टू कन्विंस देम. मैंने कुछ ऐसा इससे रिलेटेड लिखा था. एंड रिगार्डिंग द करियर अपॉर्चुनिटी भी था कि मतलब कि तुम्हारी एक सिस्टर है, तो जिसमें मतलब कि तुम्हें तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारी सिस्टर की वो मैरिज करना चाह रहे हैं. तो उसमें मैंने ये लिखा था कि आई along with my sister will try to convince my parents that my sister is want to pursue the higher education. If they are spending the money on me, then they should spend the same amount of money to her also for her education also. Yes. Okay, like, are you able to relate those SRTs with your dad or VAT somewhere? Some, Yes sir, where obviously you sir. जो relate to मतलब how. yes sir, yes sir. Yes sir, जैसे जैसे अभी मैंने ये बोला कि ये वाली थी स्टोरी, जैसे जिसमें मैंने करियर वाली बोली थी कि जैसे वो गर्ल थी, लाइक मेरी सिस्टर थी, उसको नहीं पढ़ा रहे थे पर मेरे को पढ़ा रहे थे. तो वैसे एक करियर की उसमें भी आई थी कि एक आदमी था वो चेयर पे बैठा था और एक आदमी था उसके सामने खड़ा था. ऐसी एक स्टोरी भी थी जिसमें थी. तो फिर उसमें मैंने यही बनाया था कि एक लड़का है, वो एक अपने करियर में कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके जो फादर है वो उसको फैमिली बिजनेस के लिए उसको मोटिवेट कर रहे हैं. तो मैंने इसको पर्टिकुलरली ऐसे बनाया था कि वो लड़का है, वो डिफेंस ज्वाइन करना चाहता है, बट उसका फैमिली बिजनेस अच्छा है, तो हिज फादर इज टेलिंग हिम टू लाइक डू द फैमिली बिजनेस ओनली, यू विल नॉट ज्वाइन द फोर्सेस, यू विल डू द फैमिली बिजनेस. तो फिर वो फादर को कन्विंस करता है, अपने पापा को बोलता है कि मेरे को एटलीस्ट एक चांस दे दो, इफ आई विल नॉट मेक इट इन वन अटेम्प्ट आई विल डू द फैमिली बिजनेस. तो फिर वो बहुत मेहनत करता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न निकालता है, एसएसबी निकाल लेता है, और फिर ऑफिसर बन जाता है. और फिर उसके फादर बहुत खुश होते हैं कि ओके दैट कि दैट माय सन हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग. तो इसके लिए उसके पापा बहुत खुश होते हैं. तो ऐसे इससे रिलेट करके मैंने ऐसी सिचुएशंस में जो था वो रिफ्लेक्ट हो गया था. यस. मतलब कहीं ना कहीं लिंक ही है सारी चीजें, राइट? यस आपको सर, लिंक. पता नहीं फिर उसके चलता बाद है. जो हम सर उसका जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो भी पूरा इसके रिलेटेड ही जाता है. अब बताओ SD. अब आई थिंक SRT is enough. पहला गो फॉर यस सर. SD का बताओ नेक्स्ट.
यस सर। ऐसे क्वेश्चंस क्या थे? एसडी में फिर जैसे ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, फिर वही बुकलेट्स वगैरह इकट्ठी करके उनको वापस कर दो। लेकिन जिसमें हम लिख रहे होते हैं वो हमें एक ही मिला होता है, और उसके अंदर वैसे जैसे स्टोरीज आए तो हमने स्टोरीज लिख दी, फिर नेक्स्ट पेज पे खोलेंगे तो उसमें स्पेस बना होता है पर्टिकुलर 20 तक काउंटिंग होती है, सॉरी 60 तक नंबर्स बने होते हैं, फिर उस पर हमने अपना वैट लिख दिया, फिर टैट लिख दिया। फिर लास्ट में फिर सेम एक दो पेजेस बचे होते हैं जिसके अंदर टोटल पांच पांच पैराग्राफ लिखने का स्पेस होता है अच्छा खासा। तो फिर उसमें फिर जो हमारा जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो हमें क्लियरली मेंशन कर देता है कि आपको पहले अपने पेरेंट्स के बारे में लिखना है कि व्हाट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू। फिर तुम्हें लिखना है व्हाट टीचर्स थिंक्स अबाउट यू। फिर तुम्हें लिखना है कि व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक्स अबाउट यू। और फिर लास्ट में लिखना है कि व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, कि हाउ यू आर एट प्रेजेंट, एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव एनीथिंग देन व्हाट विल बी द थिंग इन विच यू वांट टू इम्प्रूव। तो ये पांच चीजें हमें ऐसे बोलता है कि टॉप राइट कॉर्नर पे एक बुलेट पॉइंट्स पे लिख दो कि ये चीज है, ताकि तुम जब बाद में एक्सप्लेन करो तो तुम्हें सही लगे कि क्या एक्सप्लेन करना है। क्योंकि वो तो एक बार बताएगा और बोल देगा कि 15 मिनट है तुम्हारे पास, तो उसको लिखो, आप जो छूट गया जो लिखना है वो लिखना है, अब उसने उतने में करना अच्छा, like what your friends thinks about you, what you wrote in that? क्या लिखा तुमने उसमें? है। सर सर इन लाइक उसमें नहीं, मैंने हर चीज में, जैसे अगर मैं पांचों लिखे थे ना सर, मैं पांचों में कुछ कुछ रिलेट करके लिखा था। अब जैसे मैं फैमिली का बताऊं, तो मैं फैमिली का इसमें लिखा था कि माय पेरेंट्स थिंक्स दैट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय एल्डर्स एंड आई ऑलवेज हेल्प्स माय यंगर्स। तो जब टीचर्स वाले में आ गया तो उसमें मैंने लिख दिया कि माय टीचर्स थिंक्स दैट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय सीनियर्स एंड ऑलवेज हेल्प माय जूनियर्स। और जब फ्रेंड्स वाले में आ गया तो फ्रेंड्स को तो फिर कॉमन ही आ जाता है सर, फिर मैं उसमें ये लिख दिया कि माय फ्रेंड्स थिंक दैट आई एम अ वेरी हेल्पफुल गाय, एंड whenever I whenever someone needs my help, तो मैं अगर थोड़ा बहुत घाटा भी हो रहा हो, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत घाटा भी हो रहा हो, तो मैं उस पे जाके भी उसकी वह हेल्प करता हूँ उस आदमी की जितना हो सकता है मेरे से, एकदम पूरा ऐसे ही सर। तो इन सब चीजों को मैंने थोड़ा रिलेट करके पहले ही सोच के, अगर कोई आदमी चला जाए ना, क्योंकि सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो सर हमें पता होता है कि पहले से ये पूछेंगे पूछेंगे, तो उसमें अगर करके चला जाए तो वो बहुत फायदा देता है। तो आपने एसडी और प्रिपेयर किया था पहले से? प्रिपरेशन की थी एसडी की? ये सर मैं लाइक 4-5 बार तो लिख के गया था कि जहाँ पे, और वहां पे ऐसा होता है कि वहां पे अंडर प्रेशर जैसे बोलते हैं ना, कि प्रेशर के अंडर, या तो लाइक सबके साथ होता है बट मेरे साथ पर्सनली जब प्रेशर पड़ता है तो ज्यादा अच्छे से चीजें होती है। तो वहां पे हम्म। जब एक प्रेशर 15 मिनट ही है अपने को लिखनी है, तो उसे खुद ही वो चीजें दिमाग में आने लग जाती है, अच्छा ये है ये है ये है ये है, तो फिर बंदा खुद ही लिख देता है। Yes, sir. Okay, Sahil, I think there was a discussion about the psych part. Now we're moving to GTO. For that, I'll share the new link. We can join. Okay, Sahil. Now we are moving to GTO part. Okay, after your this psych, what has happened? Like what things goes like how GTO and all, how many group they have divided, and what was your GD1 topic, GD2 topic, then what is GPE, then we have a lecturate, right? So how it went. Start. Sure, sure. Sir, on the third day, like second day of the testing and the third day of the from the reporting. So sir, उसमें आया like we'll have to go for the GTO, and in GTO the things includes like the our first is about the GD, two GDs, in which in the first GD we'll have to decide. He will give us the two topics, and from there we have to decide one topic. In which amongst the groups he will give the time like 2 minutes, 3 minutes. You can decide among yourselves which topic you want to share, and the rest is another topic that is the compulsory. We'll have to stick with that topic, and we'll have to like जो भी वो देगा वो मानना पड़ेगा। और सर उसके बाद जैसे ये होता है, फिर उसके बाद इमीडिएटली वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करा देते हैं, एंड उसके बाद हमें लग रहा था कि लेक्चरेट होगा, बट आफ्टर दैट दे टुक अस टुवर्ड्स द स्नेक रेस। उसके बाद क्योंकि अब इस बार से स्नेक रेस भी शुरू कर दिया है इन्होंने, फॉर द snake race, and after the snake race they told us that again we have to go indoors. This testing was on fourth floor, it was going on fourth floor, and they told us to go there again, go into that rooms where we have performed our GD topics and the group planning exercise, and then our lecturate thing was started there. So this was the third day of the testing, and second day of the testing and third day. They called you for the GTO. Okay, so Yes, sir. you Yes. need to be informal. For GTO, no, for GTO we'll have to win a PT rig only. Like Okay, that group discussions are also going on in a PT rig only. okay. This time they were not allowing you to be in the formal, na? Because No, the sir, PT. not for GD. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, in GD1, GD2 also you guys wearing that same PT kit. Yes, sir. Yes.
Okay, then GP also you're wearing the same thing, lecturate also and outdoors also. Okay, Yes, sir. so Yes, you have yes, sir. GD1 2, GD1, GD2, GPE. You guys did in the room, right? All three Yes, sir. exercises. Then they took you Yes, outside. including yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. They took you outside for this group task, Snake race. snake race. Snake. Yes, Okay, they yes. were one group or two group for snake race. There were three groups for snake race at a time. Okay, I think they took side by side तीनों batches चल रहे होंगे already in the same Yes, sir. thing Yes, ना sir. Yes. video Like task, there were right? three GTOs who were doing the same things. Yes, sir. Okay, so snake race हुई, then they'll call you guys have to go back to your room again, then they'll start your lecture again, right? That was the thing, na? Yes, sir. Yes. Now tell about GD, how it went, like what was your topic and how many कितने लोगों group था आप लोगों का, and like Sure. kind of people you found, like they're putting some points or necessarily point, what how it was like, what kind of stuff. Yes, sir. So like as I told you that there were 54 candidates. So every group there was nine candidates. So my group was from chest number 20 to chest number 28. And when we went for the GD, so again उसमें ऐसा था कि राउंड करके वो उन्होंने वो चेयर्स वगैरह थी उसको ऐसे वो किया हुआ था, पहले से एडजस्ट करके रखा हुआ था। तो बस वैसे ही जैसे हम एंटर करें, सो फ्रॉम चेस्ट नंबर 29 वी हैव टू सिट क्लॉकवाइज इन लाइक इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फिर हम इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो फिर हम उस हिसाब से बैठ गए थे। तो फिर वही जीटीओ ने फिर ढंग से हमें पूरा ब्रीफ किया दैट व्हाट इज जीडी, हाउ वी हैव टू स्पीक, व्हाट इज द टाइम ही विल गिव अस, that in the GD1 that we have to decide one topic amongst the two. Like he will give us the two topics and we'll have to decide from them. And so regarding the GD1, there was two topics. First topic was the Russia-Ukraine war, in which Okay. he gave us certain, yes sir, in which he gave us certain leads also. Like I remember one two leads. The one was like how it is affecting India, the Russia-Ukraine war, and the other thing is that do you think that the war is a solution? War is the only solution about what is going on? And something third one was like sir, it was like some time कि अभी इतना टाइम हो गया हुआ है इस वॉर को चलते हुए, so according to you what do you think that what could be the conclusion, something like that, these things was there. And GD topic 2 was G20, like there's G20 is going on. So this here he gave us the leads that what do you, according to you, how it will affect the economical condition of the countries, how the, and next was the how it will help for the foreign investments, and how it will like take forward the image of the India, like how it will take India as a global thing, like how it will help India to be a global leader, something like that. This was the third lead which he has given us about these two topics. So I And don't then think so, Sahil, ki in our practice session we would have missed even a single point out of what you just told. I don't think yes, so. yes, sir. Not even, yes, not even point. जो topics थे रोज, और जिसने सर sincerely attend किया होगा आपकी क्लास को, it will be very easy for him to go there and go for that. Yes. Discuss well what I feel, because same topic थे जो हमने कराए हैं, right? Or we Yes, had a sir. very healthy discussion, right? Okay, yes. Yes, sir. So how it went your GD1 GD2? ये सर तो जैसे शुरू हुआ वैसे उसने मतलब हमें बोला GD1 में, उसने बोला कि आई एम गिविंग यू 2 minutes, डिसाइड अमंग योरसेल्फ विच इन विच टॉपिक यू वांट टू से। तो आई वाज लाइक थिंकिंग, आई वाज विद द G20 वाला पार्ट, आई वाज ट्राइंग टू, आई वाज like I was having good points about the G20, and so I was thinking that we should go with the G20, but I was sitting quiet, and because I was having a good content among the both. If that Hmm. Russia Ukraine we would have selected, I would have good content, and for this also I would have good. So there was one customer who started saying that okay, let's go with the Russia Ukraine, and there was one more guy who supported him. Let's go with the Russia Ukraine. So I was just about to say okay, let's okay, if someone was like everyone is agreeing to this, we will go. Then from someone from the group only, then he said okay, let's go with the G20. अरे, And okay. yes sir, and then I thought that okay, then I'll have to decide there on like in a fraction of second I have decided कि that okay, like रशिया यूक्रेन के ऊपर तो काफी अच्छा खासा कंटेंट है, and Hmm. all. Sahil, you're stuck. Hello.
हेलो 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 हेलो। और चले गए क्या? अच्छा। GD1 GD2 में क्या डिस्कशन रहा, कैसे क्या रहा सी? यस सर, यस। तो फिर जैसे डिस्कशन हो रही थी, तो पहले तो एक बंदे ने बोला कि हम रशिया यूक्रेन पे करते हैं, उसको एक और आदमी ने सपोर्ट कर दिया। हम्म। तो वैसे फिर से आवाज आई, मेरे को सुनाई दिया किसने बोला G20। और सर फिर हम्म। मैंने एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार रशिया यूक्रेन का है, तो इसके पास तो सबके पास अच्छे खासे पॉइंट्स होंगे। हम्म। लेकिन G20 है, तो मेरे को ऐसा था कि यार मेरे पास भी अच्छे खासे पॉइंट्स थे। तो मुझे एक वो था कि शायद लोगों के पास अच्छे खासे पॉइंट्स G20 के लिए ना हो, क्योंकि रशिया यूक्रेन तो काफी टाइम से चल रहा था, तो मुझे इसमें के ऊपर कॉन्फिडेंट था कि इसमें अच्छा खासा। तो फिर जैसे जिसने G20 बोला, फिर मैंने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ जेंटलमैन, आई एग्री विद यू, वी शुड गो विद द हाँ। G20 ओनली। और फिर मैं उस पर स्टिक रहा। तो फिर एक और आदमी का मेरे को सपोर्ट मिल गया, तो जैसे ही मैंने देख लिया कि हाँ दो आदमी हो गए इंक्लूडिंग मी, एक मैं। हम्म। वैसे मैंने उस टाइम फिर इस चीज पे फोकस मारना शुरू कर दिया, क्योंकि जेंटलमैन एवरीवन एग्रीज दैट वी शुड गो विद द G20। तो हम्म। 2 मिनट सन्नाटा हुआ। जिसने सबसे हम्म। पहले बोला था कि वी शुड रशिया यूक्रेन, उसका एक चीज हम्म। अच्छी थी सर, वो लास्ट में टिका रहा कि हाँ मैं रशिया यूक्रेन रशिया यूक्रेन रशिया यूक्रेन। पर सर फिर काइंड ऑफ जब वैसा बोल दिया था, फिर एक बार मैंने फिर बीच में बोल दिया कि जेंटलमैन एवरीवन एग्रीज दैट वी शुड गो विद द G20। तो G20। सर वो फिर उसमें मैक्सिमम एग्री हो गए कि हाँ ओके वी शुड गो विद द G20, वी शुड गो विद द G20। फिर लास्ट में वो जो आदमी बोल रहा था, फिर वो भी एग्री हो गया, ओके लेट्स लेट्स गो विद G20। तो फिर G20 टॉपिक बन गया था हमारा एट जो हमने चूज किया। तो उसमें डिस्कशन कैसा रहा, मतलब काफी लाइक व्हाट डू यू फील लाइक दैट व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स द कैंडिडेट शुड पुट लाइक विद स्टैट्स, or it was like anyone putting anything or some funny thing happened, like how it went? यस सर, तो इसमें क्या था, जैसे पहले लाइक बिफोर ज्वाइनिंग योर सेशन, जैसे हमें पीपीटीटी में होता था, हर कोई आता है, बोलता है, जिसको सुनाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हर कोई अपने पॉइंट रखने की कोशिश करता है। तो मुझे भी लगा था कि इसमें वैसा होता होगा, पर जैसे मैंने वो अटेंड करी थी, तो हमारी पहली डिस्कशन वैसी हुई थी, हमारा शायद फर्स्ट बैच था आपके उसमें भी। तो Exactly. हमने That's पहले, bad. यस सर, Hmm. यस सर, तो हमने भी उसमें वैसी डिस्कशन ही करी थी। फिर जैसे आपने भी बताया था, फिर और भी जो थे जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने भी बताया था आप अपने बैच में ही, कि ऐसे नहीं होता है, वी हैव टू गिव अदर्स आल्सो द चांस टू स्पीक। सर वही हुआ, जैसे स्टार्ट हुई, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 मिनट चुप बैठा कि Hmm. मैं देखूं कि हाउ Yes, sir. पीपल गॉट द कंटेंट, व्हाट दे आर स्पीकिंग। तो मैंने 2 मिनट एनालाइज किया, तो फिर वैसा चल रहा था, स्मूथ चल रहा था सर, ऐसा कोई नहीं कि हर कोई बोले जा रहा है। बिल्कुल आराम से एक बंदा बोल रहा है, सभी चुप रह रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। फिर अगला बंदा बोल रहा है, फिर सभी चुप रह रहे हैं, फिर उसको सुन रहे हैं। तो वैसे ही हुआ। और वैसे ही फिर जब मेरे को मौका लगा कि हाँ 2-3 बंदे बोल चुके हैं, नाउ आई शुड शूट अप, तो वैसे ही मैंने बोलने लगा। और सर मेरे पास अच्छे खासे पॉइंट्स थे, जैसे मेरा मेजर पॉइंट था, जिससे मैंने जो फर्स्ट पॉइंट अपना ये रखा, कि मैंने ये रखा था कि जेंटलमैन एज यू नो that this G20 summit is a very important summit, and we know that it consists of 80% GDP of the world, and it consists of 90% of the population of the world. तो मैंने जैसे पॉइंट रखा, एंड वी नो दैट इंडिया इज आल्सो नोन फॉर इट्स tourism sector, and the tourism sector of India is booming. So when the different officials from all of the countries, for example the G20 Hmm. countries, when the different officials will come to Hmm. our country for the visit, so it will be a very great opportunity for India to show their hidden assets to them. So we should plan Exactly. our like we should plan our meetings in that cities, and we should also do some like tours and trips for them, so that they can go to those cities and that they can see the tourism and all those things of that cities. So that will help in tourism sector, and that this will help in the foreign investments also. Like बाहर से लोग देखेंगे, आएंगे हमारे देश को देखेंगे, हमारी Hmm. एबिलिटीज को समझेंगे। तो लाइक दिस वाज आई वाज स्पीकिंग, और जब मैं बोल रहा था, तो आई वाज लाइक पुटिंग, एंड आई पर्सनली थिंक सर दैट कि फेशियल एक्सप्रेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर स्पीकिंग। तो Hmm. वो अगर बंदे ने अगर मेंटेन करे या उसको अच्छे से रखे, तो उसमें भी काफी हेल्प होती है। तो मैं उस चीज को भी काफी फोकस ऐसा कर रहा था कि मैं अच्छे से अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी बढ़िया रखूं, और जहाँ पे जो बोल रहा हूँ वैलिड बोलूँ। तो वहां पे लोग भी थे सर, कुछ ऐसे लोग थे, लाइक एवरीवन वाज पुटिंग देयर गुड एफर्ट्स, एंड दे आर स्पीकिंग लाइक ब्रिलियंटली। और कुछ ऐसा था, जैसे एक आदमी था, लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स आल्सो, okay, this much percentage is the GDP he was these countries hold, and this was the percentage, and how these things work. तो वो भी बोल रहा था। और फिर ऑल्सो, अब जैसे किसी चेस नंबर का मेरे को अच्छा लग रहा था पॉइंट, क्योंकि ही हैज सेट, अब ये अच्छा है, बट ही डिडंट कवर्ड सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आई एम Okay. हैविंग। मैं Hmm. बोल रहा था हाँ ओके, आई एग्री विद, लाइक सपोज इफ आई हैव टू से, आई विल से लाइक ओके आई एग्री विद चेस नंबर 26 एंड आई वांट टू इंक्लूड दीज थिंग्स नाउ। और फिर मैं Hmm. उसके बाद अपना बोल ले रहा। तो ऐसे हो रहा था। एंड ऑल्सो सर फिर जब हम बोल रहे थे, तो आई हैव नोटिस दैट देयर वाज 2 chess numbers who was not coming up for the discussion very well. They were not speaking at all. They were sitting Hmm. quiet.
तो हम थोड़ा बहुत बोल लिए और मैंने देखा कि हाँ अच्छे खासे हमने सबने पॉइंट्स दे दिए. So those two people was not saying. Even the GD also mentioned once, कि gentlemen, this is a group discussion, and I am seeing that you all are speaking, but there are certain gentlemen who are not taking that part. उसने मतलब GD ने हमें ऐसा नहीं बोला कि you should give their part. उन्होंने उन दोनों बंदों को बोला कि I am seeing that someone is not taking the part and he is not speaking up, and it is a group discussion. तो मैंने वो सुन लिया और जैसे उसने बोलना बंद किया, मैंने थोड़ा सा पॉइंट रखा और वैसे ही बोल दिया, ओके जेंटलमैन, वी हैव गिवन इनफ पॉइंट्स, नाउ आई थिंक दैट वी शुड गिव देम आल्सो द चांस टू स्पीक. And I said that okay, chess number. There was two chess numbers, 24 or 25, I guess. So I told them okay, okay, chess number 24. If you have any point, then continue. फिर जैसे उसने बोला, जैसे उसने खत्म किया, फिर मैंने फिर बोला कि okay, chess number 25 can speak now. फिर उसने बोला, फिर ऐसे करके उन दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे और ऐसे करके फिर जब जब हमारे द डिस्कशन वेंट अराउंड सर 15 to 20 मिनट्स तक अपना डिस्कशन लिया उसने, अच्छा खासा लिया. ऐसा कुछ ऐसा इसमें शायद मतलब ऐसा इसमें कुछ नहीं होता कि इफ द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग गुड तो वो दो ग्रुप में डिवाइड कर देगा और बोलेगा कि पहले ये ग्रुप जीडी डिस्कस करो फिर ये ग्रुप करो. जीडी में इट नहीं इज होता ऐसा. सेलेक्ट. जीडी का पर्पस यस ही सर, बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या ही डिवाइड करेंगे. यस सर, यस सर. तो इसमें नॉट फिर वो ऐसा. जा रहा था. यस सर, और उसने फिर वैसे किया तो फिर ये गया था. एंड सी बेसिकली यू नो व्हाट हैपन, जैसे हम भी ऑनलाइन सेशन करते हैं तो विल नॉट ट्राई टू कीप मोर देन 9 और 10. ये तो मतलब ही यस नहीं सर. होता. ग्रुप प्लानिंग का यही मतलब होता है, ग्रुप एक्सरसाइज का होता है. ओके, आई थिंक GD2 will be the same only, right? There won't be any difference, right? What was the topic for GD2? Sir, the GD2 topic was the women empowerment. Oh, It was something like that. We have seen the 26th Republic Day, and the motto of this Republic Day was also the Nari Shakti. Then how you demonstrate about that. What do you think that is a major impact, major thing which is impacting women to come to the defense forces, and how that thing is increasing. और उसमें leads ये थी कि sir that due to the improving technology or due to the rural women who are taking part and they're coming up for the for this thing to join the defense forces. So SSC leads थी. So this topic was compulsory, so we were bound to go with this topic only. So हम इसलिए भी गए थे. I think that topic Sorry. we also already discussed in our group discussion, right? Yes, GD sir, में yes, sir. discussion में the same All the topic three discussed. topics we have discussed. Yes, sir. We already discussed. अगर जो मिसकिप भी होगा वो लेक्चर में आ गया होगा. ऐसा कोई टॉपिक था ही नहीं जो हमने कवर अप ही नहीं किया. एक ही सेशन, दोस्त एक वीक के सेशन. Okay. Yes, sir. So tell something about GPE. Like anything you remember about GPE? कैसा रहा, कैसे स्टोरीज बनाई, क्या क्या लिखने को बोला, how you wrote that? Yes, sure, sir. So sir, जैसे हुआ फिर उसके बाद हमारा ग्रुप प्लानिंग जैसे इमीडिएटली खत्म हुआ फिर हमें बाहर भेज दिया उसने. फिर जैसे बोला चेस्ट नंबर 20 पे जाओ. फिर जैसे हम बाहर खड़े थे, सो ही इन्फॉर्म द हेल्पर देयर इन आउटसाइड एवरी रूम व्हेन द दिस थिंग वाज गोइंग ऑन. So outside every room there is one helper sitting. He was not from the defense. He was like from some private organization who are like giving his services to the Coast Guard. So I was sitting there, तो उसने उसको इन्फॉर्म किया कि go inside and arrange the chairs in a semicircle way. Like and then he informed us कि now we are going to do the group planning exercise. तो फिर हमें ब्रीफ किया बहुत अच्छे से कि, और उसने बाहर भी यही बोला कि आई विल ब्रीफ यू एवरीथिंग इन एडवांस एंड आई विल इन्फॉर्म यू इन अ वेरी स्लो वे एंड इन अ वेरी गुड वे, ताकि तुम्हें एक बारी में समझ आ जाएगा भाई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. उसने पूरा अच्छे से बताया. फिर उसने हमें कहा कि ओके, फिर चेस्ट नंबर 20 को बोला कि ओके गो एंड विल सिट अकॉर्डिंग टू दैट. तो जैसे वो है फिर अंदर बैठे. देन ही केम, ही ब्रीफ्ड अबाउट ऑल थिंग्स. तो जितना मुझे याद है सर कि द सिचुएशन वाज इट वाज लाइक दैट कि वी वाज अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल, क्योंकि सर मेरे ख्याल से जितने भी ग्रुप में हम बंदे होते हैं वो उतने बंदों को कंसीडर कर लेते हैं कि तुम इतने लोग हो. देन ही सेड दैट यू आर गोइंग फॉर अ क्विज कंपटीशन. तो जैसे तुम जाते हो, so there was certain distance also which was mentioned. It was like it was on a projector. एक प्रोजेक्टर था, सामने स्क्रीन थी और उसके ऊपर फ्लैश हो रही थी कि क्या है स्टोरी. तो जैसे हम जाते हैं तो फिर हमें बोलता है, फिर उसने बोलना शुरू किया दैट यू आर 9 पीपल, यू आर गोइंग फॉर द क्विज कंपटीशन, और तुम एक ढाबे पे रुकते हो. जैसे तुम एक ढाबे पे रुकते हो तो वैसे ही एक आदमी तुम्हारे पास दौड़ते हुए आता है. उसके सर से खून निकल रहा होता है और वो तुम्हें कहता है कि तीन गुंडों ने उसको एनकाउंटर किया. तुम्हारे पास एक जीप भी है. उसने ये भी मेंशन था कि तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास एक जीप भी है क्विज कंपटीशन के लिए जा रहे हो. तो फिर वो उसमें वो बताता है कि क्या बोलते हैं कि उसमें उसको 3 बंदे जा रहे थे और उन्होंने उसके सर पे मारा, जो बंदा हमारे पास दौड़ गया था जिसके सर से खून निकला होता है. और अब उनका एक नेक्स्ट प्लान है कि जाना और रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ एक्सप्लोसिव लगा देना जिसकी वजह से ट्रेन में ब्लास्ट हो जाए. और एक सिचुएशन दे दी कि एक रिवर होती है साथ में, उस रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर 15 बच्चे हैं, एक बस है, उस बस खराब हो चुकी है. और
और फिर वो लाइक उसमें पानी, जो रिवर का जो पानी है उसका जो लेवल है वो भी लाइक बढ़ रहा है। और एक और होता है कि रिवर के साथ ही एक वाटर रिजर्वायर है। तो एक आदमी तुम्हारे पास साइकिल पे चलता हुआ आता है और बोलता है कि वहां पे जो रिजर्वायर है वो टूटने वाला है, नीचे मेरी बोट है, और जैसे वो टूटेगा तो मेरी बोट उसके साथ उसकी वजह से खराब हो जाएगी। सो दीज वाज टोटल 3-4 सिचुएशंस व्हिच वी हैव टू हम्म, सी। एंड और एक और था उसमें कि जैसे जहाँ ढाबा है उसके सामने अच्छी खासी फील्ड्स है जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। यस सर। तो जैसे ही वो हुआ, जैसे उसने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ही आस्क्ड लाइक कि ओके इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग देन यू कैन आस्क मी। तो जैसे ये सब हुआ, पेन डिस्ट्रीब्यूट किया। उसने बोला कि जेंटलमैन, जो भी तुमने इसमें अंदर देख लिया है उसको तुम खुद लिखो एक बार उस शीट के ऊपर। तो आई वाज लाइक, आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग इट लाइक दैट कि जो पैराग्राफ में था कि जो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, जैसे मैंने सिर्फ मैंने जो मेरी स्टोरी थी मैंने उसमें ऐसे लिखा कि सर माय फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी टू सेव दैट मैन हु इज ब्लीडिंग। उसको मैं एक अच्छे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा जो भी नियर बाय होगा, क्योंकि सर उसमें भी ऐसा था कि एक गांव इस साइड है, एक गांव उस साइड है, और एक गांव ऊपर वाली साइड है। और लेकिन एक चीज उसमें ये थी कि जहाँ पे एक्सप्लोसिव्स हो रहे हैं, जहाँ जिस ट्रेन ट्रैक पे वो एक्सप्लोसिव्स लगाएंगे उसी गांव में ही हमारा क्विज कंपटीशन था। तो मैंने ऐसा लिख दिया था कि जो वो आदमी है जो जिसके वहां खून निकल रहा है उसको उसी गांव में लेके जाएंगे जहाँ पे मतलब उन्होंने एक्सप्लोसिव लगाया, जहाँ पे वो भागे हुए हैं। तो वहां पे जो होगा वो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज भी होगी, क्योंकि उसके अंदर वहां पे सब कुछ मेंशन था कि जैसे एक डब्बा है उसके ऊपर पीएस लिखा हुआ था विच मीन्स पुलिस स्टेशन, एक और डब्बा है उसके ऊपर आरएस लिखा हुआ था विच मीन्स रेलवे स्टेशन। लेकिन हर एक गांव में ये नहीं लिखा हुआ था कि कोई हॉस्पिटल का कोई निशान नहीं था। Like, इस गांव में भी लाइक अगर लेफ्ट साइड हमारा ढाबा है और जहाँ रेलवे ट्रैक है तो वहां पे भी ढाबे पे नहीं लिखा है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। वैसे ऑपोजिट साइड भी एक गांव था, वहां पे भी नहीं लिखा है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। तो वैसे मैंने उस पर ये लिख दिया था कि उसको हम उस साइड ही लेके जाएंगे जहाँ पे एक्सप्लोसिव लगे होंगे। तो वो आदमी भी उस साइड जाएगा, सबसे पहला काम हमारा यही पे होगा। तो जैसे हम उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे उसके बाद हम 2 बंदे भेजे होंगे उसके साथ, हम टोटल 9 थे तो 2 बंदों को हमने भेजा होगा। तो एक बंदा जाएगा रेलवे स्टेशन में इन्फॉर्म करेगा, दूसरा बंदा जाएगा वो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देगा। रेलवे स्टेशन में इन्फॉर्म लाइक टू द आरपीएफ कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे रेलवे ट्रैक पे वो हो रहा है। एंड रिगार्डिंग द पुलिस, पुलिस को भी ये इन्फॉर्म करेगा कि ऐसे ऐसे वहां पे बॉम्ब फटने वाला है, और जो वो बंदे हैं और जो जिसको चोट लगी है उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। और सर थर्ड सिचुएशन फिर मैं करूंगा जिसपे जो बस खराब होगी हुई है, तो वहां पे 4 लोगों को भेज दूंगा जिस पुल के ऊपर जो बंदे खड़े हैं, तो हम में से 4 वहां चले जाएंगे। तो टोटल 7 बंदों को काम दे दिया। तो जितने बंदे बच गए, लाइक 2 बंदे बच गए, 2 बंदे उस बंदे के साथ जाएंगे जिसको धोती पहनी हुई है, क्योंकि वाटर रिजर्वायर उसका फटने वाला है और वहां पे उसके नीचे बोट खड़ी है। तो वो 2 बंदे भी जाएंगे, और इवन जो फार्मर्स काम कर रहे होंगे उन फार्मर्स को भी साथ में ले जाएंगे। जो फार्मर्स अपनी फील्ड्स पे काम कर रहे हैं उनको भी बोल के वो साथ में ले जाएंगे और वहां पे पहुंच जाएंगे। और जैसे सर बच्चों की बस ठीक हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो जो लाइक जो 4 बंदे वहां गए थे वो भी उस फार्मर को ज्वाइन कर लेंगे कि उसकी बोट को बचाने के लिए। और फिर वो जो रिवर थी वो जाके वो कनेक्ट हो रही थी उसी गांव में जिस गांव में हमें क्विज कंपटीशन के लिए जाना था। और फिर उसमें फिर हम वो करेंगे कि उन जो बंदे बाकी बच जाएंगे फिर उसी की बोट यूज करके वो उस गांव में पहुंच जाएंगे, और उस गांव में जाके फिर अपने बाद में जैसे जब सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएंगी तो अपने क्विज कंपटीशन के लिए चले जाएंगे। तो ये जो स्टोरी थी मैंने उस टाइम उस पर वो बना दी थी और लिख दिया था। तो वैसे ही वो हुआ, फिर से हमारी जो थी वो डिस्कशन वगैरह शुरू हुई। तो जैसे ही डिस्कशन, जैसे उसने बोला डिस्कशंस करने के लिए, और पहले वही हमने वो लिख दिया, तो उसके बाद उसने सबको कलेक्ट कर लिया और उसने शीट्स अपने पास रख ली। तो फिर उसने बोला कि जेंटलमैन, नाउ आई हैव रिसीव्ड दैट व्हाट यू हैव रिटन इन दैट आई वांट यू टू डिस्कस एंड कम टू अ कॉमन कंक्लूजन, एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन, वी विल डिस्कस दैट। और सर पहले जैसे उसने शुरू किया हर कोई अपना बोलने लग गया कि ओके जेंटलमैन वी डू दिस वी डू दिस वी डू दैट। और फिर उसने हमको उस टाइम पे इसके लिए ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में उसने हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए में रखे लाइक 4 बंदे, और ग्रुप उसमें रखे 5 बंदे ग्रुप बी में। यूजली होता नहीं फिर है उसने ये। बोला मैंने पहले यस सर वीडियोस भी व्हाट ही देखी थी, इसमें होता नहीं है यूजली, ग्रुप डिवाइड होते नहीं। हम्म, डिड। देन ही डिवाइडेड अस। तो फिर उसके बाद पहले उसने बोला कि 4 बंदों को हमको बोला बोलने के लिए। तो हमने फिर उसमें डिस्कस किया, उसमें कॉमन कंक्लूजन लाए। फिर सिमिलरली 5 बंदों ने डिस्कस किया और फिर उसमें कॉमन कंक्लूजन लाए। और फिर दोनों ने जब अपना कंक्लूजन लगा दिया तो उसने क्लब कर दिया दोनों को। फिर जैसे क्लब कर दिया फिर अगेन वी स्टार्टेड सेइंग, तो फिर दोनों से अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ गए थे दिमाग में, तो मेरे दिमाग में भी काफी अच्छे पॉइंट्स आ गए थे, बाकियों के भी आ गए थे। तो इस साइड से भी सुन लिया था, उस साइड से भी सुन लिया था। तो फिर मैं खुद बोलने लगेगा, ओके जेंटलमैन वी आर एट ए ढाबा, विल गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द मैन हु इज इंजर्ड,
and we'll take him to the hospital, to that village only, where there are where there is a railway station and police station is available near to the near tracks. Or then we'll second priority we'll give to the bus who is got pension, and the third priority to the water reservoir by collecting the farmers. तो ये सब चीजें उनको सही लगी, एंड जैसे ही डिस्कशन खत्म हुई, फिर एंड में जीटीओ हमें कहता है कि ओके जेंटलमैन, हु इज अ ग्रुप लीडर? तो मैं 2 मिनट चुप था, क्योंकि आई वाज अबाउट टू नॉमिनेट चेस्ट नंबर 26, क्योंकि सर उसने भी अच्छे खासे पॉइंट्स दिए थे, तो मैं उसका नाम लेने लगा था। बट फिर मैं जैसे 2 सेकंड के लिए चुप बैठा, देन एवरीवन स्टार्टेड सेइंग ओके लेट्स मेक चेस्ट नंबर 23 एज अ ग्रुप लीडर. And there was one chess number who said about 26 also. Then 26 told me, no, 26 also took my name. And he, as someone was saying his name also, so he told me that if chess number 23 doesn't want this, then I can give. And then I said, no, I will give, I will give the, yes, sir, I will give the, like the conclusion of the story. Then GTO called me. Then GTO said, okay, chess number 23, come here. He called me. He told me to stand in front of him. Then he gave me that laser light from where he is mentioning this thing. Then he said, okay, explain to the group. So sir, whatever we have concluded, the maximum of the thing, I have narrated it accordingly. कि ऐसे से जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और ऐसे करके complete करेंगे. और फिर in a very short and a crisp thing, I have narrated that thing. तो फिर like जैसे वो खत्म हुआ तो बाहर आया, तो I asked from the group also कि is I have did that, कि मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी कि तुम्हें ऐसा लगा हो कि भाई मैं ग्रुप की मैं नहीं कर पाया. Then I was very satisfied. They said, "No, you have explained it in a very short and crisp way. That was very good." Okay, then it's great. No, that is good. That will boost your confidence to some extent. That is good, actually. Yes. Okay, now what happened after that? Snake race you went. How they conducted the snake race? Yes, sir. Yes. Then they took us outside, like to all the groups, like same fall in हुआ, और वहाँ पे तीनों जीटीओ आए थे, जो अलग अलग रूम्स में जीटीओ चल रहा था, वो तीनों जीटीओ आए. उसमें से एक जीटीओ था जो हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि लाइक जो भी वहाँ पे अराउंड 5 to 6 टास्क थे जो हमको पूरे ग्रुप के साथ करने थे. दैट जीटीओ एक्सप्लेन अस एवरी टास्क. हर टास्क के सामने हमें लेके गया. हर टास्क में कहा कि ओके जेंटलमैन, दिस इज द थिंग that you will have to cross it like this, you will have to cross it like that. And he also specially mentioned one thing, that your snake should not touch the ground. चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा स्नेक ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए. तो वही था. एंड ही वाज लाइक, देयर वाज वन साहब वाज आल्सो गोइंग, लाइक द सूबेदार वाज आल्सो विद अस. He was clapping. He was just clapping us. He was like clapping, and we'll have to run. We'll have to go to the next task. Then he will explain about that. Then again he will clap. Then again we'll have to go to the next task. And the best thing about that was that as we was also running, all the candidates was running. The GTO who was explaining to us, that was also running, and the other two GTOs who was listening to that, they was also running with us, and they was coming to the next platform, to the next platform, to the next platform. So that thing was quite good, that they are also actively taking participate in that in our process. तो सर वही हुआ, फिर बिल्कुल वैसे स्टार्ट कर दिया. एंड दे आल्सो टोल्ड अस टू मेक आवर वन नारा, कि अपना एक नारा हम बनाएं, कि जैसे हम जब भी दौड़ेंगे उस स्नेक को पकड़ के, तो हम उस नारे को चिल्लाते हुए बोलें कि टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, टू मेक दिस थिंग. और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि दैट इफ यू आर होल्डिंग अ स्नेक, तो विल हैव टू स्टैंड द चेस्ट नंबर वाइज, सो वी कैन रीअरेंज एट दैट टाइम. जैसे हमने डिसाइड किया कि छोटे आगे रहेंगे, लंबे पीछे रहेंगे, या भारी पीछे रहेंगे, मिडल में रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे. तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हो गया. एंड देन वी स्टार्टेड प्रमोट. और उसमें भी ये था, जैसे कुछ जैसे एक था सर, 2 बॉक्सेस जैसे थे. बॉक्सेस इन द सेंस कि देयर वाज वन ऑब्स्टेकल जिसमें एक बॉक्स नीचे और एक बॉक्स ऊपर है. तो विल हैव टू मेक इन अ फॉर्मेशन ऑफ 8, लाइक विल हैव टू गो फ्रॉम इनसाइड देन Inside. तो ऐसा करना था. और एंड इफ वी आर मेकिंग द स्नेक, we are making the formation of it, we'll have to make sure that our snake is also making the formation of it. ऐसा नहीं कि हम अंदर से घुस रहे हैं तो स्नेक हमको Snake ऊपर बाहर से से टपा आ दिया. नहीं. Same यस thing. सर. स्नेक भी Okay. वैसे ही अट्ठे में उसमें जाएगा और वैसे करके नीचे आएगा. और एंड देयर वाज इन दैट कॉर्नर्स देयर वाज रेड मार्क्स. To that red marks, even we cannot touch, and even our snake cannot touch that red mark. ये भी था उसमें. Okay. So we'll have to ऐसा make sure कोई that we टेंस can. हुआ था? कोई ऑफिसर आके आपको बीच में बोल रहा है कि साइड से निकल जा, यहाँ से निकल जा, यहाँ से क्रॉस कर ले, No, समथिंग? no. So that thing was not. They were just standing there. They were just Mhm. evaluating us. And when we are completing the task, if we have made any mistakes in between, like अगर red से touch हो गया, then he will stop us. He will tell us, okay, just okay, I need to repeat the task. Then the 2 people will go. They will repeat the task. And even if one group used to like complete the task in a, and there was like there was one also more thing is that कि if we are डूइंग वन टास्क, अगर हम एक टास्क कर रहे हैं
तो जब तक हमारे ग्रुप का हर बंदा उस टास्क को कंप्लीट ना कर ले तब तक हम अगले टास्क पे नहीं जा सकते. विल हैव टू वेट फॉर दैट पर्सन to come to complete the task and to come with us, and then we'll wait for the GTO's instruction that then he will tell us, okay, shoot for the next task, then we'll shoot for the next task, then we'll do that. Yes. तो स्नेक रेस तो एक ही हुई थी ना? Yes sir. स्नेक रेस ही हुई थी ना एक, और क्या हुआ था जीटीओ में? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हुआ होगा. Yes sir, individual obstacles or snake race for the outdoor task. हाँ, दो चीजें होती ना. Okay. Yes. I think it was a very good experience what I feel from this time. They Yes sir, yes included sir. snake race also and individual obstacles also. Okay, now we'll moving towards the lecturate. Okay, how Yes. it was like, how it went, what kind of candidates were there, like topics क्या थे, कुछ याद हो तो कुछ छोड़ो. Sure sir. तो जैसे ये खत्म हुआ वैसे ही हमें फिर से लाइक इंस्ट्रक्शन मिल गई, लाइक we'll have to go inside and then there will be a lecturate for us. And again we went, we stood outside, then again GTO came, he briefed us in detail that what we are going to do, how we will have to do, like when we are sitting inside, then he told us whenever the first chest number 20, like suppose he is going, he will pick up his card, he will go outside, he'll wait for 3 minutes, and up to that time, as the chest number 20 was the first one, and up to that time we will give our introduction, because at the first number chest 20 has given his introduction, like he told about his name, from the place which he belongs, from where he did his education, and what is his aim, and who is his who is his role model. तो ये सब 3-4 चीजें उसने बोली थी हमको बोलने के लिए, ताकि फर्स्ट टेस्ट नंबर को अच्छा खासा टाइम मिल जाए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि सब बाकियों में तो चलना ही होगा, फिर इसलिए उसने ऐसा करा. तो जैसे वो गया, जैसे टेस्ट नंबर 1 गया, उसने अपना दिया, फिर उसको बाहर भेज दिया. वैसे साइमल्टेनियसली हमने अपना सारा एक्सप्लेन किया. तो जैसे ही सर उसने उसमें फिर उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी कि जैसे ही मैं एक बेल बजाऊंगा, दैट इज द इंडिकेशन फॉर द चेस्ट नंबर हु इज गिविंग हिज लेक्चर, दैट ओनली द 30 सेकंड्स हैव रिमेन्ड. तो जैसे ही वो चेस्ट नंबर अपना वो खत्म कर देगा, फिर उसके बाद मैं एक और बेल बजाऊंगा, व्हिच मींस दैट हिज टर्न इज ओवर, नाउ द नेक्स्ट पर्सन कैन कम इन and he can submit the card to the GTO, and we'll tell him that what is his topic, and he will go in the center and will explain the thing. तो सर वैसे ही simultaneously हुआ था और सबने किया था. And the topic was normal. It is about the current, that what is going on. Like जो मेरे को जो 4 टॉपिक्स मिले थे उसमें से पहला था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट किया है कोविड-19 ने. उसमें से एक टॉपिक था दैट बैन ऑन चाइनीज एप्स पे बैन करने वाला. उसमें से फिर एक टॉपिक था सर, लाइक एक रशिया यूक्रेन के ऊपर ही था, लाइक द करंट हैपनिंग इज गोइंग ऑन. एंड द फोर्थ टॉपिक वाज दैट इट वाज like the South China Sea, like the increase of China's presence in the South China Sea. बट मेरे उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि जैसे वो कह रहे थे कि एक टॉपिक आएगा उसमें, मतलब क्या बोलते हैं, the two topics will be hard and 2 topics will be easy. मुझे ऐसा लगा था कि मेरे चारों टॉपिक्स ही उस रिलेशन बेस्ड है. तो मे बी दैट वाज द लक व्हिच आई हैव गॉट, और देयर वाज समथिंग एल्स व्हिच द जीटीओ हैज डिसाइडेड टू गिव दैट थिंग लाइक दैट. तो सर फिर जैसे वो चाइना का दिख गया था मेरे को, तो चाइना के ऊपर अच्छा खासा कंटेंट था मेरे पास, और इवन लेक्चर वगैरह में भी अपने अपने इसमें जो करवाया हमने, आपने जो करवाया था, तो उसके अंदर भी चाइना वगैरह के आपने वो काफी रिलेशन वगैरह पे दिया हुआ था. तो मैंने बैन और चाइनीज ऐप पे बोल दिया था. तो सर उसको बिल्कुल ढंग से खींच के कैसे डोकलाम से शुरू हुआ, फिर कैसे चाइना की, जैसे टिकटॉक को भी मैंने मेंशन किया था कि जैसे काफी पॉपुलर हो गया था इंडिया में, और जैसे ही वो डोकलाम को हुआ तो इंडिया का एक वो उसको दिखाता है कि दैट इट्स पीपल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द कंट्री. तो उसको वो करके वो पूरा उसको सर अच्छे से एलेबोरेट करके पूरा 3 मिनट ढंग से बोल के उसको खत्म किया था. Yes, sir. Okay, no, actually, guys already know that all the videos are already on the YouTube, right? I mean, I'll make some shorts so they'll get more, idea on those things, right? So I think it went well. Okay, and okay, Yes, now it Sahil, I'll was share good. one more thing. So we'll wind up in that session with the interview and conference. Okay. Sure. Sure. Sure, sir, sure. Okay, Sahil, now tell us about your experience, of interview, how it went. You know? So how Yes, it sir, sure, started, sir. went inside, what was your dress code, okay, and what kind of question he shoot up towards you, Yes, and how you sure. handle. Okay, start.
Yes, sir. So regarding the dress code, I wore a proper formal dress like shirt, pant, because I know that I was aware that this is a one-to-one interaction between the person, and first impression is the last impression, and I believe in that also. So I thought that I'll have to go with in a proper dress with a proper tie and all those things, so that it will make a very good first impression. That he will, so that he may think that okay, he's a good candidate, and he'll expect me to perform in that way only. So, sir, I just they used to tell us that we'll have to wait outside. We'll have to sit outside till the time the bell will ring, and as soon as the bell will ring, we'll have to get up and we'll have to go inside for the interview. Before that, we cannot enter inside the room like that. We just went and we'll just knock the door and we'll get inside. No, when he will call us, then only we'll go and we'll get inside the room. So, sir, as soon as I got up, the bell ring. I got up and I just knocked the door and entered inside. So before that only, I think he has made his mind to what questions he would like to ask before reading by reading RPIQ what we have submitted. So as soon as I opened the door, he said, "Okay, Sahil, come in." In a very joyful manner, in a very that manner to make me quite calm. And so I would like to mention that before that I got injured while performing my individual Ah, obstacles. Yes, sir. And on the same day, I got a call for my interview. So I went there, I sat down on the chair, and the first thing asked me about that, how's your leg now? That is it okay? I've got to know. The interview, like I think, sir, every single thing we'll do there. Every every single thing is like they are monitoring, and the reports are going to the office. But I believe, because sir, as I entered, I sat on the chair. Like he offered me the chair, and he said, "Okay, how's your leg now?" He asked me about that, how you got hurt. Then I explained him that I was doing this obstacle, and I or that thing happened, I twisted my leg. Then and he told me also that if you want to give your interview tomorrow, you can give. There is no that thing. Then I said, no, sir, I will give today only. Then he again told me that I'm not going to deduct your any points. If you want to give tomorrow, tell me. You can go and we can take an interview tomorrow. Then I said, no, sir, now I have came up. Now made up my mind. I'll give my interview. Then before starting, he just asked me about my place. That how's your place? What is the significance of the place? That फिर मैंने वो थोड़ा बहुत उसको बताया कि these things are famous, and as I am from Himachal, so Himachal is known for its temples and the tourists. So I explained him about that thing. Then he normal questions he asked, like if I'll have to go to the Shimla, then do I'll have to enter into the Chandigarh? Then I said, do I'll have to enter the Una? Then I told him, no, sir, for going to Shimla, you will have to divert from Chandigarh, like the Kalka Shimla highway. So he was confirming about that. Then he confirmed me with the temperature, that what is the lowest temperature at your area. Then I told him that. And so I was thinking that my interview has started. But then he told me, okay, now I am going to take your interview for the mm, next 40 to 40 minutes. We'll be discussing about the various things. Then he told me, okay, then he put it like various question in front of me. For mm. that, I'll have to Rapid listen to him fire. very carefully. Yes, so rapid fire. And I'll have to prepare them accordingly. I have to give the answers accordingly. So then the question which he asked me tell me your educational qualification from class 10th, that what subjects you have chosen after class 12 after class 10th, and what exams you gave after class 12, what college you choose after class 12, and regarding if you are into any sports and extracurricular activities at your school days or college days, you'll have to tell about that. And then regarding the teachers, who was your good teacher, why he was your good teacher, your bad teacher, why he's your bad teacher, or to whom you didn't like that much. Then he asked me about my friends, that now tell me about your friends, that who is your best friend, why he is your best friend, what he is doing right now. And there are certain friends. And the last question he asked me, that if you have faced any financial, did you have faced any financial problems or not? So these are the questions which he asked me, and I, in a very polite way, in a very normal sequentially, but I have remembered, I have politely gave him all the answers and explained him very briefly that these all things about these all things, and he listened to me till the last thing, till the last point I have completed. Okay. Any technical question is short up? Hello.
I'm not a BTech student, so that so, Yes, so Sahil, that's why he go just asked me on. about the technical questions. Can you hear He me? asked me about Yes, yes. yes, Some break yes, was there. sure. Some connection issue was there. Okay, tell me, did he ask any question related to postcard technical kind of stuff? Did he ask? No, sir, no, sir. He didn't ask any technical questions from me. He asked me one GK question in which was related to like the maritime security. He asked me that due to the Russia-Ukraine conflict, what do you think that the merit that thing is affecting the maritime security of India? That how it is affecting maritimely to the India? This question was there which he asked from. What you answered? Sir, I have read it somewhere that as we are importing the oil from Russia, so the USA and the other European countries, they used to give the insurance to the ship which used to take the oil or used to import various things, so that if any under any calamity like the thunderstorm or anything, if that something happened to that ship, then that companies used to give the insurance to the companies who are taking the oil or the various products from that. So US and European countries have clearly mentioned that if you're going to export or import various things to the Actually, Russia, we are not going to give you any insurance. So this was the basic thing which was affecting this. I clearly mentioned that. okay. So any other question he Yes. asked you? It's somewhere he caught you up or like didn't went well from your point of view, your interview. So there was, I almost answered him all the questions, but there was one question which I think that he was trying to put me under a pressure. He said that as you are from a sailing school, so there must be ragging which was happening there, which used to Mm, or you used to do. Then I said, mm, sir, there was nothing like that. There was a mm, clear instructions from our authorities, like from the principal, registrar, and headmaster, that we will not have to manhandle. We cannot touch the juniors. We can give them the physical punishment that was required, that much required there, so that their because sir, from physical punishment, their stamina, their endurance power also increases. So we can give that, but we cannot manhandle them. Then he told me, no, I have listened. I listened to there mm, was various candidates who used to come and they used to tell me that I used to kick, I used to cock down the junior, I used to kick them, I used to slap them. mm. You didn't did that. Man, no, sir, I didn't did that. Well, then, I know you did that. Well, no, sir, I didn't did that. There was the cameras which was there in the dormitories and the floors. So that's why there was no such thing which we used to do. Then he immediately changed the question and took me to the next part. Yes. Okay. So that was a very, great discussion. Now the last part is the conference. I think we should move on for the Yes. conference, right? Okay, okay. Now Yes. before conference, when you done with your interview, you went to your, Yes. room. Okay. Yes. So guys were there, like they were asking what a question they ask you and all those things. It happened. Yes, sir. Sir, it was actually my interview was at the last point. I was amongst the last the people who was going for the Oh, interview. So hmm, next of the people has already did their interview. But when they hmm, started, then we were I was among them or the people who was going and asking to the various people like how was your interview, what they have asked from you, and was preparing started preparing accordingly. Because there were some interviews girls who are asking about the like the who is the chief minister of that state, who is the governor of Delhi, and if you are from Himachal, he was asking about the governor of the Himachal, and if the elections have like the recent elections have gone through Himachal, so they are asking about these things also. So these questions was varying from the interview to interview how they are taking the people with them. So that was happening. I think all this question I already asked you in our rapid fire Yes, part, yes, yes. right? And that, I remember. that was a quite extreme to put you in the very very uncomfortable. What I feel from your expression Yes, that sir, day. yes, sir. But Yes, I sir. think I think, that sir. was required that prepared you for the worst situation over there. Yes, sir. Yes, sir. They was trying to put us under a pressure by Hmm. asking these questions. I don't think so that if we'll not answer that question, then that will play a major role in our not getting recommended at the end. So yes, sir. So, But you already got that environment, that that feel before appearing for the yes, real thing. So that's what I feel maybe a yes, little bit help you suppose, right? Okay, now we are moving for the conference. Okay, so how yes. it happened, like how it went, and how long you waited outside, and the people who recommended this time they waited for long or less. Maybe you will be knowing that. Please start. Yes, sir. Sure, sir. Sir, on the interview day, so there was a clear instruction that on what time we'll have to appear and what we'll have to do. So there was a instruction that we'll have to sit on the sixth floor as the conference was going on the seventh floor.
So they have told us to sit on the sixth floor. So in the morning, one officer will come and brief us. He will tell us about all the things, that if will not get recommended, then maybe you are built for some other job. Or he also gave us the examples of Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, that they also went for the SSBs, but they were not able to make it. So these all things about the APJ Abdul Kalam also, sir, they have mentioned. Kalam, And sir, I am pretty sure, but I'm and not that sure about Shah Rukh or Amitabh, right? I'm not sure about these people, yes, sir, yes, sir. right? Yeah. Yes, sir. He took the name of these. And he told us about these things, and he went. And then immediately after, when the officer left, then the Saab came inside, the Subedar came inside. Then he told us that from chest number 1 to chest number 10, they will go outside that hall. They will sit outside. There are the chairs arranged there. The four chairs was arranged just outside the room, outside the hall where we have where we were sitting. And then three chairs was just near the stairs, and three more chairs, three to four more chairs, which was on the uh, on the above the stairs. There was a space between the one stair, and there was space, and we'll go to that stairs. So that chair was arranged there, and the person who was getting inside, he can clearly see from there that okay, now the bell has rang, now it is my turn to go. So that thing was happening. So my number came. So as my leg was also injured. So there was helper sitting outside. So I told him that my leg is injured. So I like go and stand outside the door. So that was quite challenging thing for me, because I was not aware that I'll have to stand for so long outside the door. So I went there. So sir, almost like for the normal people, they're like one people was coming out, they're getting up, hardly 30 to 60 seconds they are standing outside. Then they used to hear the bell, they used to go inside, and again the 30 seconds they used to take inside, and they came back. But I stood outside 10 minutes. For 10 minutes they holded me outside the room. So I was waiting, and I was waiting and thinking, okay, now the bell will ring, now the bell will ring. So finally the bell rang. I got inside. I saw many officers were sitting there. So I like very silently I said good morning, because I was not sure that who is going to ask me from there. So when I just like went there, I went inside and stood next to my chair. So then the voice from between the officers came. Okay, good morning, Sahil. So that was my interviewer who called up my name. He was just sitting to next of the president. So then I came to know, okay, he was the vice president who took my interview. Okay. And, yes, sir. Then he started asking. Then he like offered me the seat. I said, and the first thing he asked that, okay, Sahil, tell us that how you got injured. They had narrated the whole incident, that due to this, and there I also mentioned that was my mistake. I was doing that. I unfortunately, like how I landed on my one feet and I got twisted on my leg, due to which I got injured. So sir, and then he said okay. Then he told that we have got to know that you have went for the X-rays also. Because sir, on the previous day I went for the X-rays just to confirm that whether I have got the serious injury or not. If I would have got the serious injury, I would have got for the treatment. So to know that thing, that whether I am physically fit more or not. So then he again asked, okay, now you're physically fit. I'm like, yes, sir, I'm physically fit. Well, okay. Then he started asking me that, okay, Sahil, that as you have written in your hobby that you love to listen songs. I'm like, yes, sir. So bolta, okay, then tell us one song in which your name will appear. I'm like, okay, sir. Then I just thought for 30 to 40 seconds, but I was not able to recall that any song in which my name was coming. So I simply said, sorry, sir, I cannot recall it at present. Then he told me, okay, tell me how your name has affected you in your life, whatever you have did, how that thing has affected you. Then I told her that as we know that Sahil means that Kinara or coast. So whenever we prepare for anything, like we prepare for an examination or anything, so we tends to go at the end of that thing. We used to complete that thing, and we used to try to reach at the end of that thing. So like that, I related that as the meaning of my name is coast, or the ending. So I used to say that, sir, whenever we start anything, we used to complete it. So that thing has happened with me. Whenever I prepared for the examination, I've always decided they'll have to complete it. I'll have to make it at the end. I'll have to bring the good results. I told him that much. Then after that, he asked that, okay, Sahil, what do you think that whatever you have performed in the FSB, what do you think that you'll be able to get recommended or not? Then I said, sir, I have performed, I have given my best in all the tests, except in which I have fallen. So I'm pretty confident that I'll make it this time. Well, okay. So then he asked me that, okay, do you want to give us any suggestions? So, sir, at that time, that was the quite trick part. So I thought that if I would have said at that time
कि सर ओके, मेरे तो टांग में लग गई, आपने सर इतना अच्छा नहीं डाला था वहां पे, उसको डाला करो, या कोई ऐसी चीज, या खाना अच्छा नहीं। But I just very loudly and I shot very loudly. I like keep myself in that position. I said, "No, sir, everything was wonderful." I said that. Then he said, Confidence. "Okay, yes, sir." Then he said, "Okay, now you can leave." Then I went outside and I went down. Then the people started saying, "Okay, तेरा तो हो गया क्योंकि तेरे को इतना time मिला उधर बाहर खड़ा." ऐसा होने लगे। But I was like, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता. Maybe I would have did something inside which they must not like. Because as I have said that I don't, because I was not remembering the song. My hobby was that, so I didn't said that. So there was certain things which was going in my mind, and I think to every aspirant that thing must have coming to whosoever is going for the interview or for these things. So again, sir, then we went for the lunch, and at that day the lunch was very good. So I enjoyed the बड़ा biryani was खाना. there. You got Bada बड़ा khana, खाना. yes, sir. Bada Bada khana, which includes the gulab jamun also. We got there, and yes, sir. Then we went. Then after at around 1 or 1:30, the we again gathered into the room where our biometric and all that things was done. So we were sitting, and then the officer came. Then again he started speaking about various things that okay, gentlemen, now you'll have to. If you're not able to get selected, then don't dishearten. Maybe you are made for some other job, and all these things he said. Then at the end, he said, "Okay, gentlemen, out of 54, we have selected 5 candidates among you." And he started saying the chest number. First, he said the chest number 6. Then he got up, he shouted his name. And then at that time, my heart was like, okay, let's see what will happen. Then he said, okay, chest number 23. Then I Directly. got up. Yes, sir. From chest number 6 to chest number 23. All were in between, no one selected. So then I got up and I said, yes, sir, Sahil Kaushal. And then after that, whatever chess number he took, I was not aware that what chess number, what was the chess number of other people who got Okay. selected. यार खुशी में होता है ना, मतलब यार इट्स अ बिग थिंग, राइट? मतलब थोड़ा, मतलब भाड़ में जाने दे, मुझे नहीं पता था, मेरा हो गया, बड़ी बात. Yes, sir, yes, sir. Then Right? he told us to come forward. Then we went forward, we stood there. And so everyone came and like congratulated us. And that officer also congratulated us. And then we did that medical formalities, the forms and all we'll have to do. And the phones to the others were issued at that time only, reissued to them. But they told us to wait for some time. First, we filled the form and all. Then they gave us the form and told us that okay, now inform my parents that you have made it, and we did that, sir. Okay, so I feel it was a very wonderful or great experience, right? In your second attempt, you cleared. I don't know, maybe other you Yes, have other SSBs in the line. I'm not sure. Do you have some line in yes. line? Other No, SSBs? sir. Exams are coming. The returns are there, so I'll have to give that, and then SSBs will come. At present, I don't have any SSB yet, which is in yes. But anyhow, you don't feel like you got selected, something like that. Okay, so keep preparing and appearing for other SSBs until you forget your offer joining letter, because Sure, sir. medical Coast Guard can't say anything. No? Merit and all those things, very uncertain is there we have. Okay. Medical also Huh. 7th, sir. When is the medical starting? On 7th, sir. 7th. Okay, 7th Delhi only. Yes, sir. So Sahil, any funny incident happened with you in the board, and what kind of friends you made? कुछ ऐसा, like, you know, the guys will know your interaction. What क्या क्या बातें हुई वहाँ, बहुत बातें होती है, कैसे टाइम कटा, how was it? Yeah. Yes, sir. As we know that we don't have the phones there, so the best thing about the SSBs is this part only, that we don't have the phones with us. Because sir, we have got to know lot about the other people. Like sir, everyone used to come, they used to share about their experiences. There was a lot of people who have given like 10 times SSB, 12 times. They are coming to us, they are coming here, or when we used to sit together, so they were sharing the experiences with us, like a lot of experiences like about their life, about what they are doing, how they are pursued, and these all things, so which was quite motivating for us also at that, as I was like it was my second attempt only. So there was a lot of things, and regarding the games facilities also, there was a good amount of games facilities which was available there. Like there was one volleyball court which we used to avail in the evening. Then there was badminton courts, which was there was three badminton courts was there. Like I'm a badminton player from college times only, so I have availed that opportunity. But I played only one day, and from the second another day I got injured in my leg that I did not. I especially carried that, sir. Especially carried the non-marking shoes from home that I will go and play there.
but due to the circumstances, I didn't get a chance to play. But that thing was very good. And the other thing which I liked, sir, when I got injured, so almost every people from other groups also, from other like we was distributed in third floor and the second floor. So sir, almost everyone came to me and they asked me about my health, like how's your leg now, how you doing? Some people was coming and they shared their experiences. Okay, in the previous there was some one guy who Mhm. was sharing his experience that in my previous FSB I got hurt in my like ankle, and so this was the thing which I have did. So you should also go with that. So there was various things, and even the people was asking about food also, like for that day dinner, and next yes sir, for one complete day, my meals came on my bed only. The people used to carry from the mess. So that thing was great. I made a lot of friends, and they are still in contact with me. We have shared our contacts also, and still they are telling me and asking various things from me. They and the maximum people was texting me right now also, and they're asking from me, okay, Sahil, please tell us that where we have lagged or where we should improve. Then I was whatever I have noticed from them, I used to tell them, okay, you should do this and that. So that was the thing, sir. That thing was great, sir, according to me. Uh, so Sahil, the last question I'll always ask, right? So like you are like from our like part of our channel for so long. You joined, I think, Yes, December, right? December you started, no? December. Two times yes. you enrolled, or one time you enrolled in the batch? Sir, I have enrolled two times. One for the PSP, then again for the this GD for the FS. GD. I think you were in the Rohit batch, no? That we started in January. Also, we were Yes, there practicing January yes, on yes, yes. first New Year. Yes, sir. No, no. I was in December end wala batch, sir, because my Okay. FSB was from January. So I was in December end wala batch. Yes, sir. My Okay. batch completed on first or second January. That was the thing. I didn't start it from January. I completed in January first. Okay. Completed January, right? So, Yes. so I think how was your experience with that? Then this especially for you enrolled it for GD1, GD2, and lecture batch. Do you think it's really fruitful, or like what is your opinion or point of view? Would you recommend people to be very honest? It's not like that you're coming on channel, you can't talk some shit, you can talk whatever you feel like you want for that, or any things or changes you require from our end, suggestions or something. Yeah, you can proceed. Yeah, let us know. थोड़ी तारीफ या थोड़ी बुराई जो भी है. Sure, sir. Sir, the first thing is it helped me a lot. Like honestly, it helped me a lot. Like the last SSB which I have given in 2018, the only attempt which I have got through to the NDA, I've given at that time. So, sir, till that time to till now, so there was a lot of things which I was not in touch with. So when I joined your PSB classes, so at that time, I was I was like there was a quiet thing in my mind that I used to make good stories, but I was not getting a platform to show that thing to or to test myself. Then as I got to know about your channel, so as I joined, so that helped me a lot. And because as I've mentioned in my previous video also, that practicing this thing online is a very tough thing, because sir, everyone used to speak, and in a PPT especially, where Right. no one listens to us. Even in the real discussions, they don't used to listen to each other. And in a online mode, it is quite more difficult. So sir, that thing has helped. And as I started commanding this thing from the online mode, so it was quite easy for me when I went there and spoke this thing in an offline mode, and when I was did that in a real PSP. So that thing was quite easy. And so regarding GD also, as I have told in this experience also of my FSB, that all the three topics which was given to me, that was from that only, which we have discussed already. And regarding the best thing, first of all I will say the best things. The best thing about you is sir that there is a very good josh josh in you. I will say कि भाई करना है तो करना है, कि अगर क्लासेस लेनी है तो लेनी है, because there was no single thing, क्योंकि सर ऑनलाइन ही चल रहा है. तो if you would have if been busy, you are also going for the job. If you would have been busy, you would have told us, okay, now I'm not feeling well, I will do it tomorrow or some other day. I will give you a Exactly. date. I would have अगले told दिन that. मैं दूंगा नहीं. Yes, sir. So if it is 12 o'clock in the evening, or like on the New Year, we have celebrated it together. So that, yes, sir. So that thing was very great of you. And regarding the about the OIR also, which you have put it on the YouTube, that was very helpful. That was, and not even me, all the people who have came to from the other places also, there in our PSB, in our FSB and in the PSB also, they were also praising about your channel.
that badass officer, he has put in very good content there, and we are seeing that. Also, they was knowing me. They was started calling me that from their channel only. Okay, I have seen you in the badass officer. So I Okay, was okay, like, okay. okay, okay. Yes, sir. So, sir, that thing was great. And regarding the suggestions also, sir, there is only one thing which I would like to add. Ki, as you are started now the various sessions about adding GD and all those things. So you should also go with the interview part and all those things also, so that people would be helpful in that. Like by arranging some offs, or by you can take it by yourself also, so that the people who are going for that, they should get a real experience of these some more things, and that will be very useful. Because our interview plays a very major role in the selection and rejection of the person when they're going for that. Because in GTO also we have 4 to 5 tasks. As my GTO, as I've got injured in my individual obstacle, I only did 2 obstacles. After 2 obstacles, I didn't did any. So there was people who completed also. So there was people who completed all the obstacles, but they was not recommended. And by doing just 2 obstacles, I am recommended sitting in front of you. So that thing also matters. And regarding the interview also, it is a major part. So if that thing you would arrange for the future persons, that would be great. Yes, that is the only one suggestion I would like to Yeah, sure, sure, sir. Whatever you told, we'll try to bring, right? Even I'm in the continuously talk with some officers. Okay, they give. are Yes. the interview officers, so I'll try to bring them. But I don't know how much fees they will charge. From my end, maybe I'll give for free also, but it's totally on the officer, right? It's totally on him. Maybe he'll charge Yes. 1,000, 2,000 for one interview, and also I can't say much on those things. But anyhow, I'll try to speak whether their availability is there. He's already is a pilot. I don't know, maybe he's in commercial or he's still in the service. I think he's in the commercial Okay. right now. So you go for flying and Yes. all. Some officer corrected me with that. I do have some officers, but they are not from the selection. So Yes. one officer I got, which is like ex-IU, from selection board. So let's see. I'll try to bring him, right? And Sahil, about GD1, GD2, it was good because first time we connected with your batch. I think it went well. The topic Yes, which sir. we have Yes, sir. It was. already, you like, तो आए आपके एग्जाम में वही टॉपिक्स थे हमारे भी, कुछ नया नहीं था उसमें. Yes. Yes. Sure. Yes. हाँ सर मतलब वही थे. Yes. Yeah, and the way we conducted, because first day we found some issues because we are not able to how to we conduct the lecture. But I think everything went well. The topic, discipline, dressing, and everything. I think it's is it Yes, worth sir. it हाँ to sir. That take up was. that course? Yes, Huh? sir. Yes, sir. It is. Yes, sir. Because we were wearing the. No, it was like that. It was not like that. We were wearing the blazer shirt and tie and niche kuch bhi. And when we were giving the lecture, then you have clearly mentioned that we'll have to wear the pants also. Because when Huh. we will stand, then we'll give a good impression. And it was great, sir. Because when we are sitting and we are practicing here on a proper dress, so it also helps us there also that we'll have to be a good in a good dress code. We'll have to present ourselves at a very good pace. So that will be helpful to us. So yes, sir. That was very great. Yes. So basically, I'm trying to get you that real life simulation setting, right? आपको topic Yes, मिला, आप गए, अपने prepare किया, you come back. और yes. सबके And सामने also, खड़े sir, if होके तो अलग impact डालता था. yes, and also, sir, if someone is sitting at home and he's doing that much and giving the things and like following the orders, then it will be helpful to that person only. That if he can do this thing, because that thing is also we are not present physically, we are sitting here virtually, and if we are agreeing to your things here, so we'll all like it is obvious that we'll perform good there also. So that thing used to help us a lot. Right, because in your comfort zone, you're getting everything sitting there. You get actual real life practice. Okay, Yes, maybe you're afraid to talk. You let it be, no problem. Even some people in starting find difficult to speak, but later on they back on the track. जैसे आपको yes, बैठाना है, खड़ा करना है. It's a real time simulation. आप समझ लो रियल में ही आप बैठे हो. GD1, GD2 lecture it. एक दिन में हम कंडक्ट कर रहे हैं पूरा. It is taking 2 hours. I don't think so. Next one day it took only 1.5 hours, right? Max. It won't take more than 56. yes, बत्ते sir. टाइम 40, 50. लोग टाइम पे जाएंगे. It won't be any issue. Yes. Okay. And then Sahil, what else? Anything else you want to, give suggestion to the viewers who are watching this? Uh, So only one suggestion to everyone, like who is going for the FSB or PSB, go with full confidence, with full preparation, like do hard work. As I was also not that much good student during my school days. My percentage was also very low. It is also not that thing that if you're having not good percentage at school level, you'll not clear the SSB. There are people who must have scored more than me because I was having very less. I would not disclose my percentage, here, but I was having very less there. So yes, I have. If I can do it, so you people can also do it. So it is all a matter of hard work. That what you are now, how you are doing it right now, how you are putting your efforts, how you are taking it sincerely.
whether you are attending the classes or from wherever platform you are taking the coaching. So if you're doing that, if you're using your parents' hard-earned money and you want that the value should come out, so you should work hard and do it in a very good way. That's it. Right, right. Because even though Vipul is one of the candidate who got recommended, he failed one or twice. I think 12th or 10th. He told already in his interview. You guys can watch that interview in my description link, right? Because it's totally on the things, right? I don't know what armed forces look for, right? Yes. Or no one knows. Yes. And Yes. after doing the obstacle only, you still you can make it, and the person who failed in 10th, still he can make it, right? Yes. And the person like who did all bad things, good thing in his past or something, still they are making it. Something not bad, I would say, anything. So the Yes. right time to change right now. If you're willing to put an effort for that, you can go for it. Otherwise, not. Then there's Yes. a lot of opportunities are there outside the service. Yes. Okay, so you're already from Sainik school, and that will give you more edge towards Yes. right. Okay, Sahil, it was a very nice interacting with you. I hope your experience will definitely going to help the candidates, and I'll surely recommend them to attend our GD1 GD2 lecture session. Help you a lot. Yes. So ठीक है साहिल, चलो take care. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, sir. Good night.